यो हेलो वेलकम। ये क्या हो रहा है मेरे? ओह गॉड, होल्ड ऑन चैट। या नाउ इट्स फाइन। कैसे हो दोस्तों? वेलकम वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। वी विल कीप इट लो अगेन। लाइक आई सेड लास्ट यस्टरडे, घर पे लोग बीमार हैं तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे बोलेंगे, धीरे धीरे रखेंगे। बट हाउ आर यू गाइस? Gaurav is here. Gaurav, thank you so much for joining in with the City jersey. David Silva, one of my favorite players. Gaurav, thank you so much for joining in. आपके क्लब की भी MKC भाई. Keshav भाई, as usual, is here. Sire is here. Sire भी always regular हैं. Sid is here. Sire again. आपके क्लब की भी MKC. दीपक भाई. Copium for real. Sid is here. Sid, thanks for joining the membership last time. Ananya is here. How are you, Ananya? With the Lewis Hamilton in the Ferrari, man. Crazy. Um, Arnav, yo kya hal? All good. Parth, how are you, brother? Random lad is here. Ayush is here. अरे बस बस मत हाई स्टाइल को छोड़ दो भाई, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है भाई। सस दीपक, हाउ एम आई? गुड मैन, आई एम गुड। टुडे आई मेड अ वेरी शॉकिंग डिस्कवरी चैट। टुडे आई डिस्कवर्ड अ लॉन्ग वाइट है। सो यूजुअली, चलो इसके बारे में बात करते हैं, पहले सबको हाई तो बोल दें यार। हर्ष इज हियर, अर्नव, प्रणीत, दीक्षांत, प्रयाग, सबके क्लब की एमकेसी एग्जैक्टली। नमन, दिव्यम इज हियर, सारंग इज हियर, राकेश, फ्लाई हाई, ओमनिट्रिक्स, एफडीजे, लॉन्ग टाइम इंडीड एफडीजे भाई, कैसे हो? हेलो, एक उधार दे दो मड्रिड को डिफेंडर, बाप रे। चुद गए दक्ष भाई, सच जग जे भाई, सभी की चुदी गई है भाई। क्लोई केली वाज अ बेस्ट साइनिंग रामित, अनआयरॉनिकली क्लोई केली इज अ बेस्ट साइनिंग। एलाबा को इंजरी, वी विल टॉक अबाउट इट। कार्तिक कैसे हो? दूसरी आईडी से हो या यही चलेगी? सब कुछ चलेगा कार्तिक भाई, व्हाटएवर यू फील लाइक। अंशु, विवांशु, बिबाश, परेख, सार्थक, अभी, सार्थक अगेन। ये लोग हर विंडो पे गर्म करके ठंडा छोड़ देते हैं, सेज एसकेएल। इट्स द हिस्ट्री ऑफ द आर्सेनल मैन, इट्स द हिस्ट्री ऑफ द आर्सेनल। कैसे हो परितोष? लूका टू द वॉरियर्स, लूका टू द वॉरियर्स नहीं भाई, लेकर्स। या सही बोला आपने। एंड बेबव इज आल्सो हियर। If Kai gets injured, hopefully we are boiled cooked fried. Why? It's worse than that, man. He doesn't even have to get injured for us to get boiled cooked fried. Let me just adjust the brightness on this here for a sec, and then we'll get back to the streaming. This is fine. Okay. सेम सीन विद द एफएसजी, कैन रिलेट। या इसलिए मैंने बहुत सारे क्लब्स की पिक्चर डाली हुई है on this thumbnail. You know, a lot of clubs do need that sort of copium. Some of the copium I will give, some of the copium you will give, but essentially the motive of this stream is कि हम इस stream से थोड़ी positivity लेके जाएं कि भाई, we all know our clubs are fucked, let's be honest, ठीक है? Arsenal know they're fucked. Liverpool know if things go bad, they're fucked. Chelsea have bought again some bunch of random players, not addressing their pressing needs. United as well with the ACLs and everything, they are left a little shortchanged. Although United still, they've made some really good signing, especially with Dorgu. Doku कहने वाला था मैं। एंड मड्रिड, बारसा, सब ने कुछ ना कुछ नहीं किया है। And so at some level we all are a bit screwed when it comes to our seasons. Of course, some clubs के लिए ये crisis ज़्यादा नहीं रहेगा, जैसे for example Chelsea have still signed players, United have still signed players. Madrid, they just have the best attack in the world, so they might just still end up winning the league or the Champions League, whatever they want to. Same with Barcelona, they're just performing at such a high level right now कि yes, उनके पास backups नहीं हैं, but the club in itself is in a great position attacking wise and player wise यार. But some clubs are absolutely screwed, like us, Arsenal, क्योंकि हमने किसी को player, मतलब imagine this chat that you enter January with a weak squad and you exit the January transfer window with an even weaker squad. And you do absolutely nothing to address that, man. That's crazy. So, hum thoda sa, I mean, we all know how we are screwed. Madrid don't have center backs. Barca don't have backups. Chelsea just have Pokemon. Liverpool में contract extensions नहीं हुए हैं, नए players नहीं आए हैं. Every club has something or the other, man. So we all know all of these things, bhai. But let's try and find little bit of possibility, man. Little bit of possibility, or positivity and possibilities of whatever it happens.
भाई एस्टन विला ने तो भाई दैट्स 100% ट्रू मैन, 100% ट्रू, एस्टन विला have killed it भाई. um January transfer say we can only register 3 players on UCL. Can you explain? I haven't really read that rule, yeah, Bibash, but that's what everyone is saying. So I'm assuming it's true. But I guess it's to prevent clubs from making it from one round to the next and just buying 5, 6 other players and just bolstering their squad or something like that. So maybe it's like a prevention for unfair competition कि ऐसा ना हो कि कोई क्लब मान लो टॉप 8 या टॉप 24 में है और फिर वो किसी बॉटम 12 क्लब से प्लेयर्स उठा लेता है फॉर द नेक्स्ट प्ले ऑफ राउंड. सो मे बी इट्स लाइक अ रूल टू प्रिवेंट दैट यार. डू द Cronkies think there's a draft system for players like the MLS? I don't know what it is, man. पूरे 5-1 का भोसड़ा कर दिया बोर्ड ने भाई. सही बात है. यूनाइटेड लोन्ड आउट टू अटैकर्स एंड बॉट जीरो. Yeah, you loaned out Anthony, you loaned out Rashford, and you did not bring in an attacker, भाई. For sure. So पहले एक काम करते हैं. अभी 6 मिनट हुए हैं स्ट्रीम को. अगले 24-25 मिनट तक बहुत जोर से आर आर करते हैं सब लोग अपना आर आर कर दो और उसके बाद हम पॉजिटिविटी ढूंढते हैं कि आगे क्या हो सकता है. ठीक है. यू प्रिपेयर योर कोपियम, मैं भी कोपियम करूंगा. आपकी मर्जी भाई कार्तिक भाई. ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद क्या करोगे, आपकी मर्जी. 2 आईडी से आ रहे हो तो दोनों से लाइक कर देना और बाकी लोग भी जो चैट में प्लीज स्ट्रीम लाइक कर देना. 254 people are already here. Like the stream if you haven't subscribed, of course, if you're new. I just joined and I want to say one thing. Winter transfer has been very dry and boring. Not if you're a Villa fan, not if you're a City fan. इन लोगों के लिए तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी विंटर विंडो गई है. The candidates for referee are Gil Manzano, Soto Grado, Hernandez Hernandez. I've heard Gil Manzano and Hernandez Hernandez are crap. Copium means it's like a meme where जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती तो आप कोप करने के लिए इनहेल करते हो कोपियम. इट्स लाइक दिस गैस, imaginary gas that makes you feel better. So we're just coping, bhai. City cooked with the signing, says Ananya. It's gonna take time, man. But yeah, Nico Gonzalez. They got Nico Gonzalez. They got Marmoush, Vitor Reis. They got Kusanov. बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने लिए हैं जो अच्छे ऑफ कोर्स करेंगे. लेट्स सी. एलएफसी की सिचुएशन के बारे में आपका क्या कहना है? बाय द वे लव योर वीडियोस. थैंक्स अर्नव. सिचुएशन वाइज देखो यार, आई मीन आई थिंक फॉर लिवरपूल जितनी मैंने आज रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, द बोर्ड इज़ वेरी हैप्पी विद हाउ द स्क्वाड इज़ राइट नाउ एंड इट वुड हैव ओनली टेकन अ लॉन्ग इंजरी और सम अदर सॉर्ट ऑफ क्राइसिस या फिर अपॉर्चुनिटी फॉर लिवरपूल टू एक्ट राइट नाउ. आई थिंक उनका पूरा फोकस समर में है एंड आई थिंक इन द लास्ट, अभी फेब्रवरी है, फेब्रवरी से लेके जून तक देयर एंटायर फोकस विल बी टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ वर्जिल, ट्रेंट एंड साला. And they will be working in the background to get some new players in the summer for Liverpool because I think Liverpool से भी कुछ players निकलेंगे, चाहे young वाले निकले, चाहे old वाले निकले, चाहे Trent निकले, चाहे कोई निकले. But the reality is that they are working for the summer, man. And ऐसी बात नहीं है कि Liverpool active नहीं रहेगी. I think they tried for Zubimendi. They might go again for Zubimendi. You never really know, bhai. So we'll see. LFC are lucky with injury. Yeah, in this season, yes, they are. I think अभी जो ट्रेंट की इंजरी आई है, पता चल रहा है कि इट्स नॉट लाइक अ इंजरी दैट्स गोना कीप हिम आउट फॉर वीक्स. इट्स एन इंजरी जो उनको कुछ डेज के लिए ही बाहर रखेगी, विच इज़ गुड फॉर लिवरपूल. बट या, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इफ आई कंट्रास्ट इट विद आर्सेनल, हमारी प्रॉब्लम ये है कि नॉट ओनली डू वी गेट इंजरीज टू बिग प्लेयर्स बट सेम players in the same positions get injured together. So हमारा बैकअप एंड बैकअप का बैकअप भी इंजर हो जाता है. And that just sucks, man. That just sucks. Konate might leave this summer. I don't think he will, bhai. I think he's just waiting to see कि Virgil, Salah, Trent के contracts के साथ क्या होता है. And I think उनको देख के वो निकल जाएगा यार. City is trash. I'm guessing you're a United fan. Says, tell me about Heaven, how he will finish in United because Martinez is injured now. Heaven is a left-footed centre back. What can we expect from him? Aiden Heaven is a young centre back, first of all. Don't expect him to be Beckenbauer. Don't expect him to be Maldini. He's a young kid, so treat him like a young kid. He will do some great things and he will do some fucked up things. He is great when he has the ball at his feet. He will distribute अच्छे से. Heaven is a midfielder in his ultra youth days. मतलब under 15s, under 13s में वो midfield खेलता था. We wanted him to become a centre back, so we started playing him at centre back. But his dream is to play a midfielder, and his qualities are that of a midfielder, which is when he gets the ball, he will progress it forward and he will make the ball go wherever he wants. He's great at playmaking. He's a good ball playing centre back.
हिज बिगेस्ट वीकनेस इज हिज ऑफ द बॉल वर्क, मतलब जब बॉल नहीं होती तो उसकी पोजिशनिंग, अवेयरनेस, स्पीड, ये थोड़े से इश्यूज होते हैं. अगेन, इन अ बैक थ्री सिस्टम हो सकता है ये चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं लगे उसकी वीकनेस, क्योंकि बैक थ्री सिस्टम इन जनरल इज़ अ वेरी सिक्योर सिस्टम फॉर डिफेंस. सो मे बी अब आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा एडन हेवन को फर्स्ट टीम में, बट उसकी डिफेंसिव एबिलिटी अभी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल रखती है. अगर आपको देखना है इसका एक एग्जाम्पल, तो यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल प्री सीजन में देख लीजिए. उसमें जब हॉयलैंड ने गोल मारा था, ही रैन पास्ट एडन हेवन एंड एडन हेवन मिस जज्ड इफ ही कैन कैच अप विद हॉयलैंड. उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी कुछ खास नहीं थी, बट ही इज अ किड, ही विल गेट बेटर. um Alaba injured, yes. Heard Alaba got injured, brother. That's really sad. Now now Madrid have only Asensio as a fit centre back. Yeah, no Alaba, no Rudiger. And it's sad that Alaba got injured, man. I think the guy is pretty much on the verge of retirement, bhai. No Alaba, no Rudiger, nobody else. I think आपके centre backs ही Asensio and Vallejo हैं. Even if you is Chouameni fit, by the way? No Militao. I think अब वही वाली बात है. Is Chouameni fit? If Chouameni is fit, then Chouameni and आपका ये बंदा Asensio ही खेलेंगे मेरे हिसाब से. And I think Kamavinga is fit. I think the worst case scenario is you play Kamavinga as centre back भाई. That is it. Kamavinga कहीं पे भी खेल लेगा. तक्ष भाई चेल्सी को हटा दो थंबनेल से, उनको 4-5 ले लिए प्लेयर्स. यार चेल्सी की thing is this, they have bought players, but Chelsea always buy players. It's the question is, do have they bought players that they really need right now? Too much money is fit. Too much money, touch me mummy, चूता मैनी, बहुत सुने मैंने इनके नाम भाई. Madrid's backline is cooked. Diaz, Doku आके भी नहीं रहेंगे, I think. Sadadatya, yeah, it's basically the battle of bad defenses, dude. That's it. Karthik is here, भाई. कैसे हो? Sorry, Karan is here. कैसे हो Karan भाई? Courtois in CB, let's go. Why we didn't pay 60 for Watkins? You're a Liverpool fan, first of all. And why we didn't pay? Because I think the club thought he is not worth 60 million. Whether that's a good gamble or not, वो बाद में ही देख के पता चलेगा दोस्तों. Bro, if we play Raul and Ramon, Jacobo Ramon, you want to play? I think we'll still beat City, but that's one fixture. Can't win competition with that backline. Brother, I'll tell you one thing. आई नो, एंड ये हमारे डिस्कॉर्ड पे भी होता है, हुआ है. व्हेन पीपल आर सेइंग हम जैकोबो रोमान को खिला लेते हैं, आई थिंक यू गाइज आर फॉरगेटिंग दैट यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अर्लिंग हालैंड. अर्लिंग हालैंड अच्छे अच्छे डिफेंडर्स का कचुम्बर बना देता है. द गाय डजंट नीड मेनी टचेस, ही नीड्स वन मौका एंड ही विल स्कोर, एंड ही विल स्कोर. द गाय इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. व्हेन वी वर प्लेइंग अगेंस्ट सिटी, he scored one goal, but he was and उसने टचेस ज़्यादा नहीं लिए, but he is a handful to take care of, man. He has gravity का मतलब एक डिफेंडर उसका चिपका रहना चाहिए, अदरवाइज आप इफ यू लूज ट्रैक ऑफ हालैंड you're dead, you're already dead. अगर आपने फेडे को उस पर लगा दिया, आपका आउटलेट खत्म हो गया राइट विंग वाला. अगर आपने असेंसियो या उसको लगा दिया जकोबो रोमान जो आप कह रहे हो, भाई ये लोग बच्चे हैं, एंड आई एम श्योर इनमें से एक ना एक तो खेलेगा. बट भाई अर्लिंग हालैंड को पकड़ना, आप क्या बात कर रहे हो भाई? अर्लिंग हालैंड ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आके अर्लिंग हालैंड को मार्क कर लेता है भाई. सलीबा जैसे डिफेंडर को उसने क्रश कर दिया था एरियली भाई. ही इज नॉट एन इजी गाय, ही इज नॉट एन इजी गाय. अलावा भी इंजर्ड, मैंने सुना दोस्त, मैंने सुना. व्हाई डू यू थिंक चैट? आई थिंक ऐसा तो नहीं हुआ है कि आलाबा कल ही इंजर हुआ या 3 घंटे पहले ही इंजर हुआ. आई थिंक आलाबा की इंजरी भी सॉर्ट ऑफ थी पता लोगों को. आई एम जस्ट वेरी सरप्राइज दैट मैड्रिड ने कुछ भी इमरजेंसी साइनिंग नहीं करी. एंड this is just Madrid. Good or bad, you decide. Because इनको भी पता है when they need an emergency signing, they make those emergency signings. होसलू ले लिया था उन्होंने स्पानियोल से, तो ये लोग कर लेते हैं यार. बट ये सिर्फ अटैक में ही करते हैं. They don't really do it for other places, and it's not even like Madrid को depth समझ नहीं आती. Because you look at their attack, it's Mbappe, Vinny, Rodrigo, but there's also Brahim, there's also Endrick, there's also Arda, there is also, और कौन इनके अटैक में है? बहुत है इनके अटैक में. तो वही वाली बात है यार कि हाउ कैन यू
You understand depth. Still, you don't want, man. वैंडर वेन ने बोल दिया ही इज नॉट फीलिंग राइट आई सीरियस अबाउट एंज की ट्रेनिंग ना रिकवरी डेज नहीं देता होगा क्या यार आई थिंक समटाइम्स प्लेयर्स ऑल्सो ओवर एस्टिमेट की उनकी फिजिकल कंडीशनिंग क्या है वैंडर वेन जस्ट लाइक गैब्रियल हेसूस की होती ना गैब्रियल हेसूस इज ट्रेनिंग विद इंटेंसिटी गैब्रियल हेसूस हैज फायर इन हिज बेली मैं जो बेली में फायर नहीं चाहिए तेरे टांगे ठीक होनी चाहिए एंड लुक ही ऑलवेज रश्ड हिमसेल्फ बैक एंड नाउ ही इज गोना बी एट द एंड ऑफ अ करियर नाउ आई थिंक वैंडर वेन इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ प्लेयर विलशेयर वाज दैट काइंड ऑफ प्लेयर डोंट फॉरगेट द आर बोला रोड्रिगो मैंने फर्स्ट थ्री में बोल दिया भाई so no, I don't think. Look, you can't say this, man. This is one perspective I will not agree. दैट पेरेज का ईगो क्लब से बड़ा है नहीं 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 वो बंदा अम्बापे ले आता है आप लोग गॉड फादर एडिट्स बना देते हो अगर वो गलती से अभी ट्रेंट ले आएगा समर में आप लोग वो गॉड फादर वाले बना दोगे फिर से अगर डेवीज ले आता गॉड फादर एडिट्स दिस इज नॉट एन ईगो थिंग ये तो पर्सपेक्टिव मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी आई थिंक आई थिंक मड्रिड फिनिश्ड अबव सिटी ना तो फर्स्ट लेग में मड्रिड अल्ट्रा लो ब्लॉक खेलेगी मेरे हिसाब से अल्ट्रा लो ब्लॉक सो ultra low block at the Etihad for sure. Madrid has to come away without a loss from that first leg. Second leg at the Bernabeu will help a lot, but first leg I think आपको full defensive खेलना पड़ेगा, which means I think you will go for the full most counter attacking stuff, man. आप वो तीन बंदे आगे छोड़ोगे, everyone else will be stuck at defending. And the idea will be to press them in a way कि उनकी defender से गलती करो. देखो the best thing is City's defenders themselves have a lack of confidence right now. Madrid का पूरा प्लान ही यही होगा कि उन डिफेंडर से गलती करानी है. But if City end up playing through, and when let's not forget, now City will have some really really good players coming in. हमारे against they had a midfield pivot of Bernardo and Kovacic, who as good as they were in like 2019 से 2023 तक, they're not at the same players. ठीक है? Now they will have Nico Gonzalez in there. Maybe Victor Reese will start getting opportunities in the FA Cup and उसको थोड़ा assess करने का मौका मिल जाएगा ठीक है अब मारमूश will also start learning his job a little bit वो देखना पड़ेगा यार माइक को क्या हुआ माइक खराब है क्या Are you guys not hearing me or what? हेलो हाँ नहीं माइक तो ठीक है दोस्तों um so I don't know that it's gonna be I don't think, at least in my opinion for now, I don't think the first leg is going to be entertaining by any stretch of the imagination. It could be. But I think both teams will go in that game making sure they don't make a mistake. Why? If Real Madrid make a mistake and City punish them, they go to the Bernabeu with the lead. Okay? If Manchester City make a mistake and Real Madrid have the attack to punish them, and if they go with the lead to Santiago Bernabeu, Real Madrid, to big finish by. Crazy, man. Absolutely crazy. मेक इट अ म्यूचुअली डिसाइडेड बास्केटबॉल गेम टाइप फर्स्ट लेग के बाद हमें न्यूकासल से खेलना है सेकंड लेग में पता नहीं क्या होगा सजादित्य देखते हैं आदित्य देखो उनको भी एटलेटी से ही खेलना है तो इट्स नॉट लाइक दे हैव एन ईजियर रन सो बोथ ऑफ योर टीम्स आर प्रीटी मच लाइक इन मिडल ऑफ बिजी स्केड्यूल्स फिर उसका सिटी को लिवरपूल से भी खेलना है देखते हैं क्या होता है इफ आर्सेनल लूज आउट द टाइटल दे विल रिग्रेट नॉट साइनिंग अ स्ट्राइकर आई विल बी ऑनेस्ट I don't think if we signed a striker, we would have still won the title. I think the title is pretty much done, dosto. The only problem I have is signing a striker could have been the difference between going very deep into the Champions League and then going out against a big club in the Champions League and blaming that we don't have X factor players or the players are tired. I'm sorry. City are cooked mentally and physically. What are these Madrid fans crying about? City are definitely getting knocked out even against games they have won recently. They were very vulnerable. Yeah, City have been vulnerable. I think here is the differentiator, and I think I agree with Baba's video today morning, where he says it's a 50-50. Both teams can win. And the reason both teams can win is because both defenses are pretty crap sometimes. The only deciding factor will be which attack clicks better. क्या City का Haaland plus Foden plus Savinho plus Marmoush, will that click better? Or
Will the Mbappe, Vinny, Rodrigo or Brahim or Endrick, whoever it is, will click better? वही देखना पड़ेगा यार. My scoreline prediction for the first leg is a 1-1 दोस्त. Um, it's a smart signing. This is a player that they needed. Panic, I don't think it's a reaction to the 5-1 defeat. I think even if they had won against us, they would have bought Nico Gonzalez anyway. I think Khushanov, Gonzalez and Marmoush will be included. पता नहीं यार, पता नहीं. Why don't people think Arsenal is CL contender? There's no heritage, brother. Um, जिनकी heritage नहीं होती है, you will not back them. It's like it's like आप स्कूल में हो एंड किसी ने पटाखे फोड़ दिए दिवाली पे एंड टीचर्स आ गए क्लास में. देयर विल बी सर्टेन पीपल दे विल हैव अ लॉट मोर सस्पिशन ऑफ रादर दैन सर्टेन पीपल जो बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है. ठीक है ना. तो एक इनहेरेंट बायसनेस भी होती है एंड वो इनहेरेंट बायसनेस अनफाउंडेड नहीं होती. कुछ लोग हेटर्स होंगे बट जेन्युइनली द रियल reason is that there is no pedigree of European competition. We have had far better squads than this, that have not made deep into the Champions League or the Europa League for that matter. So इसलिए ऐसी बात है. All right. So literally 10 more minutes of RR and then we start with the Copium, man. Arsenal does not have a squad to compete against the big guns. We are a good team but without a cutting edge right now. That's true. That's true, Parth. Yathar, thanks for the contribution. Now that Spurs have signed Kevin Danso, Matthias Tell, what are the chances Spurs progress against Liverpool? VDB is probably injured, so Danso will start. Yeah, Danso will start. It's going to take a while for him to get used to, first of all, Ange's system, but also against a team like Liverpool that are relentless. I don't think Liverpool are taking this competition lightly. Definitely not Arne Slot. The fans kitna bhi usko downplay kar दें. But they are going to go for the win. They're going to hunt for it, and it's at Anfield, if I'm not mistaken. So, I think Danso will play. Will they progress? Is a completely separate question, man. Um, from what I have seen, Tottenham will always leak goals. The question is, can they just get one goal or a couple? Can they just get a couple of goals? That's the question, brother. जो define करेगा. Spurs will leak goals. Brentford के against they didn't leak goals. Fantastic performance, but I've seen them leak goals against Leicester and whatnot. And for an attack as relentless as Liverpool, या मुझे नहीं पता कि they can hold off. So Spurs definitely need to score. Will they score is a different question altogether, brother. That's it. As a Chelsea fan, I want to say that Colwell is so protected, even though he has not done good so much. I think the idea is this, man. I think this is Colville is not good, of course. He wasn't good yesterday as well. But I think this is largely to do with fans. Fans see a 17, 18, 19-year-old and they automatically elevate them to world class level. ठीक है. अभी जैसे लुइस केली का हो गया, द गाय हैज नॉट इवन प्लेड डबल डिजिट गेम्स एंड पीपल आर सेइंग दिस इज आवर फुल बैक फॉर द नेक्स्ट 10 years. We have spawned 100 million talent. Let the guy at least have 10, 15, 20 games, man. Let him have a season. Let teams adapt to him and his weaknesses. He has strengths, he has weaknesses, and लोग कह रहे 100 million का talent है, पागल हो गए लोग. Let him grow, let him make mistakes, which is why I don't like what we're doing with Ethan Nwaneri also. He is playing way too much. He's great, bhai. He is ready. Of course, he is ready, bro. You have to manage him though, because मैंने जब बर्नार्डो सिल्वा को देखा ना उसको टांगे मारते हुए in that game against City, मेरी फट गई थी. Not only because that, but when he is good, people will come and try and hurt him. People will cynically foul him. People will shove him. एंड उस पर प्रेशर बनता रहेगा. एक 17 साल 18 साल का लड़का को इतने प्रेशर नहीं देना, उसको प्रोटेक्ट करना होता है. एवरी वन इज नॉट एल्यूमिनियम आर. यही प्रॉब्लम है. अगर आप वो PL फॉर इंडिया वाली वीडियो देखोगे, लोग उसको कोलविल को वर्जिल एंड सलीबा कैटेगरी में डाल रहे हैं. भाई वर्जिल फर्स्ट ऑफ ऑल सलीबा तो छोड़ो. वर्जिल वैन डाइक हैज हैड ईयर्स ऑफ डोमिनेंस, नॉट टू बी कंपेयर्ड विद लीवाई कोलविल. ठीक है. बेस्ट सेंटर बैक इन द प्रेम लीवाई कोलविल 21 साल का है, 20 साल का है. वी शुड डू दिस. वी ना, लेट हिम मेक मिस्टेक्स, मैन.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हाइप दीज प्लेयर्स अप एट द एज ऑफ 20 इतना ज़्यादा, फिर वो अंडरस्टैंडेबली एक 20 ईयर ओल्ड 21 ईयर ओल्ड वाली गलतियां करते, फिर हम बोलते हैं ही इज़ नॉट गुड इनफ, भाई इसको बचाओ। ना 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 ना, स्टॉप। अपना बीडू किंग एरिक, थैंक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन भाई। कोपियम तो नहीं है, बट पीपल आर स्टिल नॉट रियलाइजिंग हाउ मेस्ड अप यूनाइटेड्स फाइनेंसेस आर। ऑस्टेरिटी पीरियड का और पेशेंट रीसेट विद यंग स्क्वाड आने वाला है। इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू गाइस to get to the peak United level. The good thing for you is you make so much money, you can accelerate that process a lot. But yes, you're right. Abhi finances are absolutely screwed. Absolutely screwed. To the point your margin of error is very thin. It's not you can't spend money, it's just that the margin of error is very, very thin. That's it. Same about Euro. Oh, 1000%. I think Euro is a generational level talent. मेरे हिसाब से he can turn out to be one of the best centre backs in the world. बट लोग अभी उसकी स्ट्रेंथ्स को ओवर हाइप कर देते हैं और उसकी वीकनेसेस एंड गलतियों को भी ओवर हाइप कर देते हैं। जस्ट अ किड मैन, ही इज जस्ट अ किड। व्हाई कांट वी विन यूसीएल दिस सीजन इफ साका कैन जॉइन इन द एंड? Yeah, this is like I will tell you guys again. We are dealing, even though these guys are professional athletes, we are dealing with humans. You cannot expect Kai Havertz to run 90 minutes intensely, ask him to score, ask him to press, ask him to hold up the ball, ask him to link up and do everything. Can't ask Martinelli to also play left back when the defensive duties are required, and also ask him to score goals when he's running down the pitch 40, 50 yards. You can't ask us 18-year-old to do that. You can't ask Martin Odegaard to do that every 3 days. At some level, these guys need rest. साका आ जाएगा, गुड मैन, बट साका गया क्यों? बिकॉज 2 साल तक उसको कुछ रेस्ट नहीं मिला, कोई रेस्ट नहीं मिला। साका 80-90 मिनट हर हर गेम खेलता, 80-90 मिनट। एंड सो that should be a lesson in itself, that if you don't manage players they will go down, even if they're Bukayo Saka. वो तो अच्छी बात है, ये बुकायो साका है, उसकी टॉलरेंस 2 साल की थी बिफोर ही फाइनली ब्रोक डाउन। बाकी लोगों की ये टॉलरेंस नहीं है। somebody will go down with some injury एंड फिर हम रोते रह जाएंगे, वो हमने नहीं किया, वो नहीं किया। द रीजन वी कांट विन द चैंपियंस लीग इज वन, फिटनेस। नंबर टू, when we come up against a Bayern Munich, an Inter Milan, a Man City, a Real Madrid, a Juve, a Barca, कोई भी टॉप टीम ले लो आप, ठीक है, टॉप 8 वाली, टॉप 24 वाली, अ टीम विच हैज पेडिग्री, हिस्ट्री एंड नोज द बिग मोमेंट्स, हाँ, हम उस मोमेंट पे डिसाइसिव रहेंगे या नहीं रहेंगे डज नॉट ओनली कम डाउन टू टैलेंट, इट ऑल्सो कम्स डाउन टू फिटनेस, कम्स डाउन टू एनर्जी, अटेंटिवनेस, बहुत सारी चीज़ों पे आएगा। बट द डिफरेंस विल बी जब हम बायन को फेस करेंगे, केन के पास 1v1 चांस है, केन फिनिश कर देगा। हाइवर्ट्स के पास 1v चांस है, गनाब्री या साने या फिर टेल तो चलो चला गया, बट गनाब्री, साने, मूसियाला, इनके पास एक कहीं एज ऑफ द बॉक्स से मौका आएगा, दे विल शूट, विल दे स्कोर? मोस्ट लाइकली। विल आर फिनिशर स्कोर? नॉट रियली श्योर। हमने लास्ट एलिमिनेशन एट बायर्न म्यूनिख पे बोला था वी डू नॉट हैव एक्स फैक्टर प्लेयर्स, नहीं थे। आपको याद है जब हम वी टुक अ 1-0 लीड अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख थ्रू साका, उसके बाद बेन वाइट हैड अ चांस, डिड नॉट टेक दैट लीड, वी स्टिल एंडेड द गेम ऑन अ ड्रॉ। बट इन द सेकंड गेम हमने कुछ नहीं किया। थॉमस टूकल ने एक चीज करी थी, 2 बंदे लगा दिए थे साका पे, साका न्यूट्रलाइज्ड। एक बंदा लगा दिया ओडेगार्ड पे, ओडेगार्ड न्यूट्रलाइज्ड। हैवर्ट्स ने कुछ नहीं किया, हैवर्ट्स जब प्रेस करता था नॉयर ने उसकी खींच ली थी। ट्रॉसार्ड ने कुछ नहीं किया, हेसूस ने कुछ नहीं किया, एंड नोबडी एल्स डिड एनीथिंग एल्स। सो वी गॉट न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली, एंड दैट इज द थिंग। सो it's not about just having Saka coming back, it's also about do you have that X factor. मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूँ, साका के हैवर्ट्स के जीए स्टैट्स अमेजिंग है। इस सीजन ही इज डन 15 जीए in much less games compared to last season. So statistically he's progressing. But the problem with Havertz is not कि वो गोल मार सकते हैं, असिस्ट दे सकता है। द प्रॉब्लम इज जब क्रूशल मोमेंट आएगा, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो डिलीवर करने के लिए? उसने एक बहुत अच्छा गोल लिया अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, बट दैट वाज द फोर्थ गोल। What we need Havertz for is not only the fourth goal, but also when you can make it from 1-0 to 2-0. जब डिसाइसिवली गेम को किल ऑफ करने का एक मौका था अर्ली फर्स्ट हाफ में, कैन वी ट्रस्ट ऑन हिम फॉर दैट? ईसाक वर्सेस, जब न्यू कासल वर्सेस आर्सेनल हुआ था, ईसा को एक मौका मिला था, हाँ,
कैराबा कप में, जब वो एक फ्री किक से हमने थंग से डिफेंड नहीं किया, ईसा को एक मौका मिला, फिनिश कर दिया। एफए कप में देखो हैवर्ट्स को कितने मौके मिले थे हमें लीड पे डालने के लिए, नहीं लिया एक भी मौका। इट्स नॉट अ हैवर्ट्स ओनली थिंग बाय द वे, ये ट्रॉसार्ड भी करता है, ये मार्टिनेली भी करता है, ये ओडेगार्ड भी करता है। सिर्फ साका ही है जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ कि ये 1v1 गया या उसको एक हाफ चांस मिले उसको कन्वर्ट कर देगा। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। Reckon Spurs have more of a pull, or is it that Bayern and Spurs have a good relationship post Kane deal? Yeah, it's a bit of both, man. I seriously think, and this is no shade to Spurs, I seriously think अगर यूनाइटेड एंड स्पर्स जाते इस डील के लिए, सॉरी यूनाइटेड एंड आर्सेनल जिस डील के लिए जाते सीरियस इंटेंट से, तो ले लेते। आई डोंट नो व्हाई नीदर ऑफ अस डिड नॉट गो। यूनाइटेड ने अपेरेंटली वो लोन फीस रिजेक्ट कर दी, आर्सेनल को टेल उतना कंपेलिंग नहीं लगा। अगेन डोंट नो हाउ मच टू बिलीव दैट। Spurs are apparently paying 10 million euros in loan fees and 60 million euros for that option to buy. I'm sorry, that is not going to happen. So Tottenham पे उसको गेम टाइम ज़्यादा मिलेगा, नो आई एग्री मैन, but still it is what it is, bro. I think the best reason for him to join Tottenham is that Tottenham are in 4 competitions, so even if let's say they get knocked out tomorrow, he still gets to play in the FA Cup, he still gets to play in the league, and he still gets to play in the Europa League. If he joined United, Europa League, FA Cup, League. If he joined Arsenal, Champions League, Premier League. 2 competitions. So that's probably it, man. That's probably it. Any idea when Saka will be back? यार जितना सुना है वो मार्च के एंड पे आएगा। इट्स सच अ सैड थिंग, बट यू नो व्हाट, कल मैंने रीस जेम्स को जब देखा ना खेलते हुए अगेंस्ट वेस्ट हैम, वन ही लुक्ड सो मच स्लोअर बाय द वे। देयर वाज दिस मोमेंट व्हेन somebody ran past him. I think it was Carlos Soler. Carlos Soler ran past him and Reece James could not keep up with him. Second, he went down injured as well. At one point, मेरे को लगा फिर इंजरी होगी बंदे को. So, as much as I want Saka back earlier, like mid-March, early March, whatever you want to call it, मैं नहीं चाहता उसको rush back करें. Even if we turn over this result at St. James's Park somehow, हम मान लो न्यूकासल से जीत जाते हैं, Saka will not play a part in the Carabao Cup final, and I don't want him to play a part in the Carabao Cup final. So, yeah, I think, and I don't think he will play in the round of 16 also. I think round of 16 is in March, if I'm not mistaken. So he won't play in the round of 16 also. इसका भी एक benefit है कि team is learning to play without Saka, but this is like, I mean, I don't know, man. This is like somebody who gets beat up giving Copium ki like, at least I'm learning how to take punches and eat punches. Bhai, you're getting beat up, man. That's what's happening. Yeah, Martinez की ACL हो गई, Dragushin की ACL हो गई, man. That's crazy. Bro, last year team was not confident against Porto. They had nothing. I know they won before. Ego. But look at their squad and your team was perfect against Bayern. Are you saying that team was not confident against Porto? Yeah, I think Porto played in a way which was properly suited to hurt us, man. A mid block, splitting their center backs, completely nullifying us. Um, and but here's the thing. I think that Porto wala game is a lot more revisionism than actual analysis, because अगर आपको याद हो first leg में, the only reason we lost the first leg was because Galeno basically hit the perfect shot outside the box, perfect curl right into the side netting, which was beyond the reach of Raya. 99 times out of 100, he's not making that shot ever again. It was the perfect shot, just like Emerson's free kick against Arsenal. And second leg, I think we coped really well. Goal maar diya tha, which is why I think it went to penalties. Um, but I think we were good enough to not lose the first leg. But ठीक है, Bayern के साथ I have different level of complaints. How was Nico Gonzalez? I honestly don't remember much from that game. I don't remember Nico Gonzalez ज़्यादा. There was another player. I think V से नाम था उसका. Alan Varela played really really well in that game. I don't think Nico Gonzalez did though. All right, RR done. Now give me your copium. Even if you're any fan who if you're a fan who's not happy with the transfer window, give me copium as to why you feel ठीक है boss, give me some positivity. 60 for Gonzalez is too much.
It's what it is, man. It's his release clause. Would you like to see Bengal and Indian colors? What? Konsika was good against Arsenal as well. We might face him, bhai. Give me Copium. 300 million in the summer. I am telling you, Renesu. मैं तेरे को अभी बता रहा हूँ. Semenyo. Sesko has an RC. Lukman has an RC. Gyökeres has an RC in the summer. ठीक है. मैं कहता हूँ ईसाक भूल जाओ. Forget Isak. You can get Sesko. You can get Semenyo. Mbuemo has a gentleman's agreement. Cunha has a gentleman's agreement. Watkins, I don't think we'll go for Watkins again. Finished. That saga's finished. Zubimendi, Naipan. There are so many players we can get. There are so many players we can seal right now. There is absolutely no fucking need to wait till the summer. अगर समर में बार्सिलोना के पास पैसे आ गए और हम जा रहे हैं सेस्को के लिए और बारसा जा रही है सेस्को के लिए, सेस्को हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा. ठीक है. सो 300 million is a minimum. You cannot go with a positive net transfer balance in two consecutive windows when you are on course or when you're deciding to chase for the title. Bhai, shameful, shameful, shameful. इस पे कल मैं वीडियो भी निकालूंगा. I saw some articles about Alexander Isak to Liverpool, and it's a rumor that you're going all in for him for 120 to 150 million. Here is the thing, man. The reason I never believe any Alexander Isak rumors is one, Newcastle is rich. Two, his contract is till 2028. Three, he never agitates for a move. And if Newcastle gets Europe, even if it's Europa League, he will stay. He will stay. People underestimate the happiness of Bruno Guimaraes and Tonali and Isak and Gordon at Newcastle. लोगों को लगता है कि वो वहाँ पे नॉर्थ साइड पे बैठ के मिजरेबल है. भाई, द फैंस लव देम. दे गेट गुड मनी. दे आर इन अ क्लब विच इज कंपीटिंग फॉर यूरोप. अगर न्यूकासल 14th 15th पे होती, श्योर मैन, फेयर इनफ ब्रो, बट नो. Copium is Ethan and Miles. Yeah, that is true Copium, man. We have suddenly spawned players who can play in two very crucial positions for us, to the point we don't miss Takehiro Tomiyasu. To the point we don't really miss Bukayo Saka. I'm happy that my club Villa is cooking this January with transfers as Yo-Yo Buddy. Amazing, bhai. A striker that Arsenal and Barca will sign. I think we will fight for Sesko, both of us. I think Barca and Arsenal will fight for Sesko. As a Barca fan, what can I say? You can see you got money from Nico Gonzalez, and now I think you will go for Nico Williams also. By the way, Nico Williams RC also in the summer. Arsenal should be triggering it agar wo available hai. A poor winter means summer will be there where we get all our primary targets. I want this copium so bad, Parth, but there has been no guarantee. It's been 3 years and we've needed the same bloody thing. Striker, striker, striker for 3 years, bro. But yeah, एज यूनाइटेड फैन मैं तो बैठा हूँ किस्मत के भरोसे. जो होना है होगा. रेलीगेट होंगे. पीएल जीतना होगा. मिड टेबल होगा. मैं एमरन सैक हूँ नॉर एमओ इन GGMU. भाई मैं उसका नाम सुन रहा हूँ. रूबन एवरेज. भाई दैट्स क्रेजी. Daksh bhai, we are done. Ancelotti said this is emergency. Bhenjo, they were sleeping in Jan window. Mbappe injured calf muscle by the red card tackle season. Is Mbappe also injured now? That's crazy, man. Reese is still fit is the only positive, says Ananya. 24 million for Nico is the copium for Barca fans, for sure, man. No defender available for Madrid, still no signing. Sanjay bhai, that's crazy from Madrid, man. I don't understand why. It's the winter market too. That's why 60 million. For Watkins, listen, man, I'm sorry. Watkins के लिए दे देने चाहिए पैसे. दे देने चाहिए थे पैसे. रियल इमरजेंसी बाय करके खुद को और प्लेयर को दोनों को खराब कर देती है. Barca has reached 1:1 ratio. That's good copium, by the way. That's good copium. MLS and Onari will get a proper striker in the summer before City match. Arsenal was a transition kind of phase. Ode coming back from injury, Saka out. Now I think this team is ready to compete, says Bellamy Blake. Good copium, bhai. Good copium. 9 on 10 copium, bhai. Arsenal versus Barca. Who will win according to you? Is it Barca or Bayern Munich? I'm guessing since you have a massive DP, you mean Barca. Right now, man, Barca's gonna win, man. They're gonna destroy that defense the way we play and the way you play. Your defense is also really good. I think Barca is the most well-balanced team probably after Liverpool right now. रूबन इंटरिम. हाँ, रूबन इंटरिम भी है. रूबन एवरेज भी है. मैंने सुना है Matthias Tell was told Ruben Amorim I'm Amor out. बहुत सुना है मैंने भाई. 13 million only for Nico. तो कहाँ से स्पेंड करेंगे हम? 13 million means 50 million की आप टोटल खर्चे कर सकते हो.
मेरा कमेंट ले लो, ले लिया भाई. Copium is Sterling go back to Chelsea. That is true Copium, man. That is actually true Copium. Shut up, man. What Copium do you need, man? You got Rashford, Asensio. Who else did you get? You got Rashford and Asensio. You got Disasi. Bhai, Bhai, Villa got Disasi, Asensio, Rashford. They sold Duran for really good money. They managed to keep hold of Watkins. Um, the only my copium is this, by the here is my copium for the winter transfer window. ठीक है. स्ट्राइकर भी 8 भी 2 साल पहले भी पार्टे बैकअप चाहिए था. Didn't buy in the summer, ended up getting जॉर्ज. तू मेरे को आज गुस्सा करवा के दिखाएगा भाई. You're so right, man. You're so right. You're actually so right. Got Malin as well. Here is my copium. Okay. City spent a lot of money. They have to play Liverpool. Villa spent a lot of money. I think they have to play Liverpool. Right? Villa have to play Liverpool again. Um, Basically everyone who's bought players, United as well, they have to play Liverpool. That is my copium, that these guys who have strengthened in the winter have to play Liverpool. That is the copium I'm having. कि like हम लोग इनसे खेल चुके हैं. So like even if Rashford decided to show up for the last 6 months, purple patch Rashford, भाई only Liverpool has to face this copium. So that is my copium. Oh man, Edu said his back years. भाई आज मैंने I read this article today, okay? Not article, I read this report today, which basically said when Arteta wanted a striker, Edu's suggestion was Rodrigo Muniz. Fulham वाला. Rodrigo Muniz was Edu's suggestion for Arsenal, man. Edu का बहुत ऊपर नीचे वाले suggestions है, man. He suggested Murillo and he suggested Rodrigo Muniz. I don't know, man. We can face Villa in the UCL though. I don't think so, man. I think we'll be on the other sides of the bracket. Or maybe even if you're in the same side of the bracket, no problem, man. Oh shit, United versus Liverpool, दोनों matches done. Ah, shite, man. और यूनाइटेड डोंट हैव टू फेस लिवरपूल. टू बी फेयर, यूनाइटेड का सबसे लीस्ट इम्पैक्टफुल साइनिंग्स रहेंगी डोरगू एंड हेवन. यूनाइटेड डिडंट रियली स्ट्रेंथन देयर अटैक, सो उतनी होप भी नहीं थी मेरी. बट या Daksh, what do we need? Young striker and experience and who can give us 3 good years? Brother, I think we need both, man. It's not we're going to need one striker. We have Kai Havertz as a striker. Let's be honest, is not the most clinical. We have an ACL riddled Gabriel Jesus as a striker, and our backup strikers is Trossard and probably Martinelli. We don't really have strikers, man. So I would say we need two strikers, though. There is no transfer window for Liverpool. Jorel Hato um, came to Anfield. We have the Dutch captain. If he put in a bid of say 35, I actually bound to sell. So your copium is Jorel Hato and some really good players will come aage chal ke. Copium is Trossard is getting enough sleep before Newcastle game. Cheedo भी नहीं हमारे पास. Barca needs some depth in attack and fullbacks, but happy that we didn't make a panic signing. Plus, we're back to 1:1. I think that's good copium. 1:1 is big copium. I know दोस्त हमने बात कर ली इस पे. Copium is what are you using and inhaling to? What drug are you taking to cope with the fact that your transfer window was shit? मैंने अभी बाबा एंड लॉल्स का थंबनेल देखा. I don't think Cheeto is that good as people make him out to be. पता नहीं यार Renesu. I've said this on Discord also. One of the reasons Cheeto was so highly rated in the youth academy setup is because he is bigger and stronger and faster than other people his age. But going into the first team is a big step up, and वो क्या उस पे cope कर पाएगा, that's a big thing. Yeah. Only copium is Garnacho is thing. I cannot see him in any other club. Can I be honest? I think United should have sold Garnacho. But now, of course, if you're not buying a striker, तो कोई और बात है नहीं. But yeah, it's too early for Cheeto. United ने फ्यूचर के लिए खरीदा है. यूनाइटेड ने फ्यूचर के लिए बहुत खरीदे हैं. डिएगो लियोन, एडन हेवन, लेनी ओरो, चीडो ओबी, बहुत है उनके पास. माई कोपियम इज मड्रिड डार्बी विल बी अ ड्रॉ. भाई मैं तो सोचो अभी छोड़ दो सिटी वर्सेस मड्रिड, मैन. सिटी वर्सेस एटलेटी में इफ दे आर गोइंग विद जीरो डिफेंडर्स एंड injured Bellingham and injured Mbappe, फिर क्या ही होगा? As a Chelsea fan, I'm also happy Garnacho is staying. Lesbian Nacho, Lesbian Nacho.
My copium is cities win might propel us against Newcastle. By yeah, that is the finest of the copiums, man. Not recognizing that we play away, not recognizing if we're like trailing. But yes, that's cope. That's the purest form of copium, cut from like the nicest Colombian uh, trees and farms, bhai. Yeah. Dhruva Jyoti, thanks for joining the membership. And I just posted the new Discord link yesterday, so you can go on the members only community tab. Community पे जाओ एक members only post देखेगा. You can see the link there. Join the Discord, man. It's fun. Takshi Barca will go for Isak or Gyökeres and will buy Nico Williams. I think every club should abandon the dreams of Isak, man. Even if you're Madrid, even if you're Barca, I think you should abandon. It's gonna cost too much money for you guys. Everyone, it's gonna cost too much money. And I think if Barca, even if let's say Barca get Isak for like 120, 130 million, you are back to square one when it comes to financial needs. फिर से वही problems हो जाएंगे आप लोगों की. My copium is going out against Plymouth. Balls, bhai. Um, only if we sign Isak or Gyökeres will be acceptable. मैं बता रहा हूँ हम लेंगे सेस्को, ठीक है, और हम लेंगे एक और कोई रैंडम बैकअप स्ट्राइकर. वी गोना गेट टू स्ट्राइकर्स, वी गोना गेट वन मिडफील्डर इन जुबी मेंडी, अ kid for the future in Naipan, and we're gonna get one defender. We're gonna get 5 players and one keeper. जोन गार्सिया आ जाएगा. बट भाई 300 million. I want to see 300 million in the summer. Else, if Arteta works, I will not blame him because this board has fucked him at every possible corner, man. That Taklu Tim Lewis, man. That Taklu Tim Lewis. I read this thing. Tim Lewis was against us signing Declan Rice because he felt हम बहुत ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं. Declan Rice is our best fucking player, भाई. Sometimes Apple's touch is too good, man. Sometimes Apple's touch is too good. When is Baba and Lols? I think it's 9 p.m. today, man. It's 9 p.m. today. Our copium is David Dutter. Oh shit, you have no, but David Dutter is also injured, man. David Dutter is also injured. Um, Copium is Barca 1:1, hoping we will spend 200 million in the summer. Oh my god. All right, let's see. So for Arsenal, let me tell you, for Arsenal, I think we're getting a goalkeeper. Sterling is gonna go back. We should get a winger in Nico, hopefully. So so goalkeeper, winger, two centre mids, at least one centre mid, but two centre mids, one main striker, and that's it. I think five. A backup striker would be ideal. 6 players would be the best. Even if you put an average of 60 million per signing, that's 350, 60 million, bhai. We need to spend, bhai. We must spend, bhai. And before all of that even gets, before we even get to the bloody summer chat, before we get to the bloody summer, a director of football needs to happen. A director of football needs to happen. How are we now looking for a director of football when we are 5 months away from the January transfer window? All right, so that's Arsenal. Bhai, let's not. Our Copium is only signing one CB, that too with heart issues. Danso has heart issues. I didn't think Spurs need Copium, man. Spurs got Kinski, Danso, Tell, and by the way, Spurs, you've got a really good player you just bought from Chelsea, an academy kid. Um, something. He's also a double-barreled name, man. Some Chelsea kid you've just bought. Apparently, he's very, very good. Think we'll make Setford a backup goalkeeper. भाई हाइन को बेचो फिर, ठीक है, हाइन को बेचो, नेटो तो चला जाएगा. सेटफर्ड को बैकअप बनाओ फिर, ठीक है, बनाओ सेटफर्ड को बैकअप. अगर राय सारी गेम्स खेल रहा है, सेटफर्ड बैकअप, पोर्टर थर्ड कीपर, हाइन को बेचो. हाउ इज कार्ल हाइन डूइंग फॉर एस्पानियोल में ही है ना कार्ल हाइन? आई डोंट नो कहाँ पे है. The only game I saw Karl Hein was against Madrid and he got absolutely beat. Nidhi has hinted some change in the PSR rules, which is the reason big clubs have not signed anyone in the winter. I don't think there are PSR rules change. There is this new rule which is going to come into effect called the UEFA squad control rules.
which is a team's total wage can be a specific percentage of the revenue. For the first year of squad cost control, it's going to be 85, then 80, and then 75. And I think it stops at 70. That's what I feel. Bring me Luis Campos. भाई get me Luis Campos, man. लुइस कैंपोस इतना लड़ाकू है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा. रिचर्ड ह्यूज ले लो हमसे भाई. वेट फॉर रिचर्ड ह्यूज टू एटलीस्ट पुट सम पैसा, मैन. ये डायरेक्टर, स्पोर्टिंग डायरेक्टर वाला तो सर्वर में दिसंबर में बोला था भाई. हाउ आई वाज सो अनॉयड व्हेन आई रेड फ्रॉम द एथलेटिक दैट आर्सेनल विल स्टार्ट देयर डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल सर्च आफ्टर द जनवरी विंडो. आर यू मैड? कुर्तवा, कारवाहल, मिलिटाओ, रूडिगर, आलबा, बेलिंगम, कामाविंगा इज आल्सो आउट. बढ़िया भाई. Mbappe is also out for the game. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. मजे करो भाई. अम, अगर किसी को ये लग रहा है कि मेरे कमेंट सेलेक्ट नहीं हो रहे, पहली बात यार 528 लोग हैं. आप लॉटरी खेल रहे हो कमेंट्स के साथ. सुपर चैट कर दो. प्रॉमिस करता हूँ आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और अच्छे से जवाब भी दूंगा मैं, जैसे यथार्थ किंग एरिक के दिए थे. कुछ लोग जो ज्यादा रेगुलर हैं उनके मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ. लुइस कैंपोस एक्सटेंडेड पीएचडी, बट चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लोग आ जाएंगे. नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है. बट the problem is this: we want somebody of Luis Campos's caliber. That's definitely what we want, man. Watkins, Mitoma, Marcos Llorente would be my suggestions. चलो ये तो आर्सेनल की हो गई. United, what would be your ideal summer coming up, man? What do you need? What is your squad's needs? सब अपने अपने क्लब्स की बताओ. अपना क्लब का नाम लिखो and दक्ष भाई we need this या फिर player. My copium for the title: Arsenal has played City, Spurs, and Villa. Tough fixture for me would only be Liverpool, Newcastle. We also have to play United, by the way, and we also have to play Chelsea. But Liverpool have to play City, Newcastle, Chelsea, Arsenal, Villa, and Spurs. My only problem is this, yaar, Bellamy Blake. By the time we play Liverpool, the title might be done. I think the title is done in the next 9 games. The only way we have a serious chance of winning the title is if Liverpool drop 9 points, and a team that has only lost one game is suddenly not losing three. The only way they lose three in a row or 3 games in the next 15 games is if they get a serious injury, and I don't want to wish for that. But this is Liverpool's year, man. वो मेरे को बोर्नमथ वाली गेम में ही समझ आ गया था when Kluivert missed that open goal. When Kluivert missed that open goal and when Nunes put that chance in at the end, bhai, I understood it's their year, man. They're really really good. They're really really good. Dragushin को भी ACL हो गई, हाँ दोस्त. Real Madrid, Saliba, Trent, बहुत ही बढ़िया. All it takes is 2 losses. No, brother, it takes 3 losses. It'll take 3 losses for us to be equal to them. Do you understand? Not even overtake them. 3 losses for them for us to equal them. Dabbu, thanks for the membership again. Yeah, love you so much, brother. Love you so much. भाई check out Dabbu on Twitter, man. Makes really really good comps यार. बहुत अच्छे comps बनाता है. Love the guy. मेरा तो फिर भी नहीं देख रहे, रेगुलर भी हूँ, फिर भी मेंबर्स भी और मॉड भी. हर्ष भावा कभी कभी मिस हो जाता है यार. कभी कभी मिस हो जाता है. Isak, Gibbs White, Joan Garcia, Nico. I don't think Arsenal can get Isak. Gibbs White maybe, Joan Garcia definitely. Nico will have to see, man. Basa says we need Nico Williams and a good striker. I agree. I think it's time to replace Lewandowski. At least 6 signings for United: striker, left interior, right wing back, left centre back, and proper ball carrier and backup CDM. Yeah. I think आप लोग Hjulmand and Gyökeres लोगे. I think Gyökeres goes to United, man. एक प्लेयर ही ले लेते भाई. I know, dude. I know, man. Imagine having a positive net transfer, man, in the winter window and the summer window. That's crazy, man. Chris Wood in the summer. Tottenham, Cardoso, Johnny Cardoso, Esteve from Burnley, Dibbling. I think Burnley के साथ वो ऊपर आ जाएगा, प्रमोट हो जाएंगे. Esteve. Dibbling or Mbomo, Miguel Gutierrez. Good stuff, man. That's really, really good signings for Spurs if अगर आप लोग कर लेते हो. Mbomo थोड़ा मुश्किल है because I think a lot of clubs will go for him. But yeah, if you're getting Sesko, then nothing less than Liao at left wing. कहीं एक तो सही बात है यार. I'm sorry. Arsenal need to make peace with one thing. Superstar players will command superstar wages, dude. आपको सस्ते में कोई प्लेयर नहीं मिलने वाला है. You have to lighten your pockets to actually make that step up, man. Look at Declan Rice, man. हमने 19 साल के लॉन्डे के लिए 30 मिलियन दिए थे सलीबा के लिए, ठीक है.
और लुक एट द डिफरेंस एंड लुक एट द इम्पैक्ट ही हैड. हमने गैब्रियल के लिए 27 मिलियन दिए थे जब वो 23-22 साल का था. लुक एट द इम्पैक्ट ही हैड. हमने डेक्लिन के लिए 100 मिलियन दिए. लुक एट द इम्पैक्ट ही इज हैविंग भाई. आपको 20 मिलियन विद 40K पे आपको नहीं मिलेगा यार. यू हैव टू गेट अ सुपरस्टार समवेयर मैन. इट्स क्रेजी. इफ Isak, okay, if Isak is going to take a British record fees, let's say न्यूकासल मांगते हैं ईसा के लिए 150 मिलियन पाउंड ब्रिटिश रिकॉर्ड फीस ऑफ एनी प्लेयर एवर. आई डोंट नो इफ वी विल पे इट. आई डोंट थिंक वी विल पे इट बिकॉज हमारे बोर्ड में अब लॉयर्स भर चुके हैं एंड लॉयर्स आर जस्ट रिस्क अवर्स मैन. बट हमें 150 मिलियन भर देने चाहिए. इफ न्यू कासल बोलता है हम तो आएंगे ही तभी बात करने अगर तुम 150 मिलियन दोगे और हमें बोलना चाहिए हम देंगे 150 मिलियन. एट सम लेवल यू विल हैव टू गो फॉर अ सुपरस्टार मैन. वरना आप जस्ट टेल अस यू वांट टू बी लाइक अ फकिंग सेकंड ग्रेड टीम जो बस नंबर्स बनाने आई है और थोड़ा सा सीजन में मसाला डालने आई है यार. हम भी उम्मीद छोड़ देंगे यार. हम क्यों उम्मीद लगा के रखते हैं कि ओ कुछ हो सकता है, मे बी समथिंग विल हैपन. This is the problem, man. The dreams that the club promises us and what it actually delivers, man, is night and day. अगर आपके सपने हार्वर्ड ज्वाइन करना है और आप 8 घंटे नेटफ्लिक्स देखते रहते हो तो भाई आप नहीं जा सकते हार्वर्ड. जो आपके सपने हैं और आपकी रियलिटी उसमें इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है भाई. आप कभी नहीं अचीव कर पाओगे. And so if you want to win the league you will need superstar players. If you want to win the Champions League for the first time in the history of this club you will have to get a superstar, man. Every team who is in the top 8, maybe barring Villa and Arsenal and Lille, every team in the top 8 has one recognizable superstar. It's crazy हम नहीं जाते. Mukund bhai, thank you so much for the contribution yaar. Love you so much brother. Manan says Manchester United will go for 2 DMs, Quenda, Gyökeres. Quenda बहुत बढ़िया है player. LCB as Leach is injured and inside forward backup for Bruno such as Naipan. I think Naipan के लिए हम जाएंगे. I think Naipan के लिए it's going to be us, Girona or Aston Villa. आई डोंट थिंक यूनाइटेड जाएगी नाइपांग के लिए. बट मनन भाई थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन यार. ये सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स जो आपको अंडररेटेड साइनिंग्स है. मतलब द फाबियो वियरा टाइप्स एंड रैंडम अदर साइनिंग्स. नो मैन यू हैव टू गो फॉर समबडी हु इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट समथिंग मैन. ये बहुत जनरलिस्ट्स हो गए मैन. बहुत हो गया ट्रॉसार्ड. बहुत हो गए ये सब बच्चे बच्चे. नाउ यू नीड टू गो एंड गेट समबडी हु इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. Daksh, how does Brighton say no to that 95 million for Mitoma? Please help me make sense. I don't know, man. The quote Brighton and Tony Bloom are notorious for selling. They must have sensed something important in their own model to keep Mitoma. No, what I mean is Renesu, Trossard best nikla hai. But my point is this. If we are going for a left winger, we need him to be the best left winger in the world. ट्रॉसार्ड सिर्फ चल तू ट्रॉसार्ड छोड़ दे कीवियोर ले ले. ही इज नॉट द बेस्ट सेंटर बैक मैन. ही इज नॉट इवन द बेस्ट लेफ्ट बैक. टॉमी आसू जनरलिस्ट हु कैन प्ले मल्टीपल पोजीशन वो नहीं चाहिए अब मुझे स्पेशलिस्ट चाहिए. लेफ्ट विंगर टॉप 5 इन द वर्ल्ड है. स्ट्राइकर टॉप 5 इन द वर्ल्ड है. मिडफील्डर टॉप 5 इन द वर्ल्ड. आई वांट आइडियली स्ट्राइकर में, मिडफील्ड में एंड डिफेंस में हर एक जगहों पे एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो टॉप 5 इन द वर्ल्ड है. ठीक है. Liverpool have it in attack for sure, in Salah, in defense for sure, in Van Dijk, in goalkeeper for sure for Alisson. Maybe midfield में लोग कहेंगे कि the midfield is good, functional, but top 5 in the world वाले नहीं हैं उनमें बंदे. ठीक है. Barca have Pedri, have Yamal, have Rafinha, have Kubarsi. जब अराहो फॉर्म में था अराहो भी. ठीक है. कीपर उनके पास नहीं है. बायन, केन, मिड में मूसियाला. ठीक है. भी डिफेंस में शायद से कोई नहीं है बट नॉयर भी एक अच्छा गोलकीपर था. सो दे हैव सेम विद इंटर, बरेला, बस्तोनी. ठीक है. अटैक में लौटारो. चलो टॉप 5 किसी के लिए नहीं होगा बट अच्छे हैं यार प्लेयर्स. ठीक है. सिटी, हालैंड, व्हेन ही इज ऑन फॉर्म मे बी इवन रूबन डियास को आप कह सकते हो इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है. रॉड्री. भाई एवरी टॉप टीम हैज 2 or 3 recognizable बेस्ट इन द वर्ल्ड.
बेस्ट इन द वर्ल्ड, वही वाले लोग चाहिए हमें. For Liverpool, you want Burkhardt. I don't know about him. Hatate, I know. Samuel Lino, Murillo. Murillo would be really, really good. Left back के लिए आप Samuel Lino कह रहे हो. Although I'd say Hato would be best. Hatate, okay, fair enough, man. These are actually FSG signings जो Richard Hughes कर सकता है. मुझे लगता है बोर्नमथ से लेकिन आप सेमेनियो के लिए ट्राई करोगे. That's what I feel. हम बारसा वालों को एक क्लिनिकल स्ट्राइकर दे दो. भाई, you have the UCL fucking top scorer, man. Shut up, man. हमने हमने एक सेंटर बैक स्पॉन कर लिया है इन सलीबा, जो एक टॉप 5 है. डेक्लन राइस आई डोंट थिंक टॉप 5 है, बट ही इज गोइंग टू गेट देयर. वो यू नो ही इज गोना गेट देयर इन द टॉप 5 इन द वर्ल्ड. इवेंचुअली ही विल. एंड स्ट्राइकर पे फॉरवर्ड में हम साका कह सकते हैं. ठीक है. यू नीड वन मोर मैन. यू नीड वन मोर डूड. वुड यू टेक सेमेनियो? व्हाई नॉट भाई, 100%. बट आई नीड अ बेस्ट इन द वर्ल्ड मैन. देखो, you cannot dream about the Henri Vieira Bergkamp days until you get an Henri Vieira Bergkamp caliber of player. That's my thing. Leao or Nico? I would take Leao. For no other reason except we haven't had the saucy player in such a long time since Alexis. The, the last time Arsenal had one of the best players in the world was Aubameyang. Aubameyang se pehle Sanchez and Ozil. But Aubameyang was the last time we got somebody of a superstar caliber. I don't know, dude. Matlab, this is squad planning coming to bite Madrid to an extent. That's it. हाँ यार, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. मुझे बताऊँ क्या लग रहा है रेनेसू. अगर अगर पुलिस ने पार्टी के अगेंस्ट केस ड्रॉप कर दिया ना, उसी दिन उसको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे. एलेक्स रूनारसन भाई. रूनार एलेक्स रूनारसन. क्रेजी मैन. अडिंगरा. भाई. भाई, अडिंगरा is going to the fucking championship in Sunderland, man. I can't believe it, man. And this is it. We have loaned in so much player, we couldn't even loan in Adingra. Harto, Murillo, Kimmich, Gomez, Kelleher, Trent, Nunes would leave. Kimmich to Bradley. Kimmich to back Bradley. Nah, Kimmich is not coming for a rotating role, brother. And rotate in midfield if he's Sophie. I'm telling you, if you're getting Kimmich, Kimmich is starting by. United need to loan Hoyland to Atalanta. Heaven for strikers. Buy a striker. I think उससे पहले Zirkzee जाएगा. Hoyland से पहले. And if you actually had to sell one of the two between Hoyland and Zirkzee, I'd say sell Zirkzee. Buy a striker, right wing back, defender in Inacio, midfielder in लॉकी फर्गसन. नहीं, लॉकी फर्गसन तो बॉलर है. एल फर्गसन कौन है? मैंने सुना है नाम उसका. एडरसन. इनसाइड फॉरवर्ड एजे. सेल डालो ओनाना बाय कोबल. स्ट्राइक मार्टिनेज एंड मूविंग यार. दैट्स इट. बाकी स्टिल लुक फाइन. My copium for Arsenal, Sesko, Lukman, Zubimendi, Openda. Openda तो is not. They are not selling Sesko and Openda at the same time. Naipan maybe. Partey renew. Trossard renew. Trossard ain't renewing. MLS and Ethan renewal. MLS and Ethan will renew. Uh, Bhai, it's his opinion, man. Look, you don't get to be Cristiano Ronaldo until you have that sort of self-belief. You might not agree with him, man. But he's had a career better than most footballers who ever lived. Jorginho is going. Jorginho is going. Tierney is going. I think मैं वही कह रहा हूँ. सेंटर मिड्स पे एक तो जुबी डूबी डू आ जाएगा. And I think एक नाइपान आ जाएगा. नाइपान ain't gonna come to us if we're not guaranteeing him first team football. That's what I feel. So if we get Zubi Dubi Do and Naipan, हमारा midfield हो जाएगा Zubi Dubi Do, Rice and Odegaard with Merino backing wherever it's needed and Naipan also being a part of it, of the setup. So that's what I feel it's gonna happen for a midfield. Or beach में, and I think we'll make if Tomiyasu somehow retains fitness, man. बेन वाइट भी आ जाएगा, टॉमियासू भी आ जाएगा, जिनचेंको तो चला जाएगा, टेर्नी चला जाएगा. एक लेफ्ट बैक शायद से हम बच्चा बच्चा कहीं से ले लेंगे. एमएलएस को हम आगे बिठा देंगे मिडफील्ड में. दैट्स व्हाट आई फील यार. I saw. Valverde's plays CB in case Hokchua is unfit. Hokchua. Your dream left wing forward for Arsenal, Leao.
Get me either Leao, get me Nico Williams, and if you want to go domestic, get me Semenyo. Man United, Bastoni won't happen. Gyökeres might happen. Quenda will happen. Angisa don't know. Cherky will not happen. Texter is a cunt. And Dibbling, I think, will go to Spurs. Martinez is loyal. Yeah, Lautaro तो is not happening भाई. सपने छोड़ दीजिए. भाई, how good is Job Bellingham? He's got he's a Jude Bellingham light. That's it. He's a Jude Bellingham light in the sense उसके पास he's not as physical as Jude. He's not got that running power as Jude, and he's not got that finishing and shot power as Jude. If you could get Jude from Sadar Bazaar, that's him. But he's also young, man. Give him time. Rodrigo is the ultimate भाई. Ultimate. अगर free रैन, free पैसा, अनलिमिटेड पैसा हो और मैड्रिड ने उस दिन पी के रखी हो, देन रोड्रिगो एज लेफ्ट विंग बैक, लेफ्ट विंग फॉरवर्ड भाई. आई थिंक सिटी विल सेल ग्रीलिश इन द समर. आई टेल यू हु आई थिंक सिटी से निकलेगा. आई थिंक बर्नार्डो इज गोना लीव. आई थिंक केडीबी इज गोना लीव. आई थिंक अकांजी स्टोन्स में से एक निकलेगा इनमें से. एडिसन विल लीव. दैट्स व्हाट आई फील इज गोना हैपन एट सिटी. Grealish to destination Newcastle. I don't know. Who Gundo will leave. Yeah, Gundo will leave. I think आप कहाँ पे चिपका सकते हो ग्रीलिश को? आई डोंट थिंक. आई थिंक न्यूकासल नीड अ राइट विंगर मोर देन एनीथिंग एल्स. या डब्बू, ये जो अभी हम देख रहे हैं ना सिटी के साथ, दिस इज स्टेइंग अफ्लोट. एक्चुअल रीबिल्ड सिटी का समर में ही होगा. समर में ही होने वाला है. गॉर्डन इज बेटर देन ग्रीलिश. मैं वही कह रहा हूँ. दे नीड अ राइट विंगर राइट नाउ. ग्योक्रेस एंड वर्ड्स ले आओ. सिंपल है. इतना सोचना क्या है. अच्छे से प्रोजेक्ट समझाओ एंड ले आओ. 200 मिलियन लगेंगे लेकिन टीम सोच के बनेगी. आई डोंट थिंक Gyökeres will come. I think Gyökeres might come, but Haaland, Marmoush, Gyökeres, I think will be an overkill again. आई थिंक आप लोग एक विंगर लेने की कोशिश करोगे. ऑल्दो डोकू है, सवीनियो है, ग्रीलिश का पता नहीं, कहीं चिपकाना पड़ेगा आपको. ग्रीलिश लाइक विला कहीं चिपका देना. लेट्स सेंड हिम बैक टू विला टू बी ऑनेस्ट. इफ विला इज एम्बिशियस अगेन, वो देखना पड़ेगा. वर्ड्स 150 मिलियन, डोंट नो मैन. By the way, have you been following? I know Bayern fans हैं chat में, and Bayern fans will refute this. But I saw Ebel's statement, and I saw Uli Hoeneß' statement about Jamal Musiala, that Jamal Musiala not signing a contract extension does not mean we will give him unlimited patience. So Musiala का देखना पड़ेगा दोस्तों क्या सीन चलता है आगे. If Musiala is available, and if we are not there for Musiala, fold the club भाई. Fold the club. Because जब हम यूरोपा लीग में थे, Arsenal don't really have the finances or the pull to make these superstar signings. जब हम यूरोप से बाहर थे, we don't really have this. अब हम चैंपियंस लीग में हैं. हम तीसरी साल कंसेक्यूटिवली आई थिंक सेकंड फिनिश करने वाले हैं, एंड हम फिर से चैंपियंस लीग में होंगे मोस्ट लाइकली क्वार्टर सेमीज तक. हाउ कैन, व्हेन विल यू गो फॉर मूसियाला देन? क्या चाहिए आपको फिर मूसियाला के लिए? अच्छा, तुम आर्सेनल के लिए बोल रहे हो? ओ फॉर मोक्ष, मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपने क्या लिखा था. अच्छा, आप कह रहे हो वर्ड्स के लिए एंड ग्योक्रेस के लिए. आई डोंट थिंक ग्योक्रेस यार. मेरे प्रॉब्लम ये है मोक्ष के, अभी ना हमें सिर्फ हमारे इतने सारे प्लेयर निकल रहे हैं मोक्ष, कि यू नॉट ओनली नीड क्वालिटी, ऑल्सो नीड क्वांटिटी. तो वो देखना पड़ेगा यार. आर्सेनल, नाइपान, सेस्को, रोड्रिगो यार. रोड्रिगो विल बी ड्रीम भाई. जुबीमेंडी, हाटो, आउटगोइंग जिनी, टॉमी, जॉर्जी, जेसूस तो यार अब नहीं निकलेगा एसीएल तक. आई वांट टियर्नी टू स्टे. टियर्नी इज गोइंग ब्रदर. दैट्स द सैड पार्ट. ज़ारागोजा से लिंक आ रहे हैं यूनाइटेड के. यार वो बायन से निकल के कहाँ गया है, हाउ इज ही डूइंग राइट नाउ? मैन सिटी ले लेगा. वो तो ले ही लेगा यार. मैन सिटी ले लेगी. वो तो ले लेगी. आई हैव अ ड्रीम कॉल्ड HMSC. वर्ड्स कहाँ खेलेगा? ओडेगार्ड है भाई. निकालो सबको. वर्ड्स इज द गाय यू बिल्ड द एंटायर टीम अराउंड. विला कोपियम फॉर द समर. Karan says Rashford backup, Disasi backup. अच्छा, यू वांट Rashford permanent? पहले उनको खेलने तो दो भाई. लेट देम प्ले. व्हाट इफ देयर आस? Karan,
Kamara extend, one backup keeper, Watkins, air and cash backup. Okay, fair enough. I don't think City में नहीं मोक्ष. I think you will go ham in the summer. Is Bruno top 5 in the world in position according to you? You mean Fernandes? If you're talking about tens, chat, in tens, I'll tell you who I think are the top tens in the world. Um, I think Musiala, Wirtz. Who are top tens, chat? I know Madrid का academy defender है. आप लोगों के लिए राइट बैक बचा हुआ है. आई थिंक आप कैम्बियासो ले लोगे समर में. जी के देखना पड़ेगा. Musiala, Wirtz, Olmo, Palmer. Yeah, yeah. Oh, अच्छा, you saying? अच्छा, अच्छा, you want their backup. I thought you said you want to keep them. I was like, अरे, what is this copium? Bellingham, striker in AMF areas. Olmo over Bruno. Would still say Messi. Yeah, बताऊँ क्या chat? It's very difficult to now quantify Ronaldo and Messi in these conversations because they're playing against part-timers, man. Cambiaso is almost done. Bellingham, Musiala, Wirtz, Olmo, Palmer. All right. Ineos have increased ticket prices to £66 for a match, which was earlier £35-38. Yet we are in a situation where a single mistake can lead to us an excessive debt. ये चेल्सी बहुत श्योरली एस्टेबान पेरेस को नहीं खिला पाएगी और उन पे बिड फेंकेंगे तो ओनरशिप बेच भी सकती है. आई थिंक उनसे पहले ना यंकुंकू को बेचेंगे. एंड आई थिंक एस्टेवा एंड कैंड्री ओनली बिकम अवेलेबल 6 महीने बाद. It takes 6 months for the ownership to turn on a player, man. That's why it's gonna take a little long. Musiala, Wirtz, Olmo, Palmer, Bellingham. I don't know, chat. For me, if he's not even in the top 5, 6th is definitely Bruno, man. Bruno's a really, really good attacking midfielder. For various reasons. Longevity, fitness, multiple positions, set pieces. He's really, really good, man. And he's a good leader also. Olmo over Bruno is an L take. पामर के लिए मड्रिड आएगी बिड करने. नहीं आएगी वेदांत भाई. नहीं बेचेंगे वो. They've got them on the death row contract भाई. Chelsea के लिए you want Bulka as the keeper, Schlotterbeck and Osimhen. Chat, thoughts on Osimhen? Do you think Osimhen is good for a top team? Let's say Arsenal or let's say Chelsea or United, Spurs, Barca. Would you want Osimhen? I hope we don't give number 10 to Nwaneri. Bhai, number 10 should be kept vacant until there is somebody who's deserving of number 10. If Barca 1:1 Copium, I will stop supporting this club, seriously affecting my mental health. Chat 560 people are here. Please आप लोग stream को like कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है. Subscribe if you're new. वो चेल्सी आ जाएगा पता नहीं क्यों. ऑसमैन का recent goal देखा भाई, insane. United should get him. भाई a team that crosses should get him and I think Chelsea will get him. I think Chelsea will get him. वो जॉन ओबी मिकेल उसके कान में खुसफुस खुसफुस कर करके उसको भेज देगा चेल्सी. पामर गया तो 150 मिलियन मांगेंगे. ट्रू. नो, यस, नो. ओसिमन इज परफेक्ट फॉर अस, अनन्या. चेल्सी फैन. ओके, मे और मे नॉट वर्क. स्पर्स जा सकता है यार वो. सी यू हैव डॉम सोलांके, बट डॉम सोलांके इफ ही गेट्स इंजर्ड अगेन एंड अगेन भाई, इट्स क्रेजी सीन्स. And I'll be very surprised, Lilywhites, if you keep Tell for that money, man. Keep 14 and 10 vacant. Bhai, it has to be somebody who's a superstar level. मतलब somebody has to get to Saka levels to get the number 10 or 14 from now on, भाई. And I was very pissed जब मैं पढ़ रहा था कि हमने agree कर दिया नाइपान को number 10 देने के लिए. किस बारे में भाई? No, 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 no. You can't let a kid have this sort of power over you. He will leave when he wants and he will come when he wants then. Jude? Ode should get number 10. Bhai, no way, man. Keep him at number 8, man. ऐसे तो अंकुंकू भी कभी चेल्सी से बाहर निकल ही नहीं पाएगा. सही बात है. दैट इज वाई नहीं निकल पाया वो. Because Chelsea have an absurd demand of like 65-70 million for Nkunku and nobody's paying that for Nkunku, man. Any top club instead of Arsenal should go potty, man. Potty, man, क्यों भाई? Osimhen, if available, is must sign. That guy carried Napoli and now is carrying Galatasaray, especially the amount of crosses we attempted this season, says Rando. All right. Yeda hai Osimhen.
या मेरे को बताऊँ क्या है चैट. आई थिंक टीम्स नीड येड़ास मैन. लाइक like every team has some sort of a yeda, you know. Okay, team chat. आपकी टीम में who's the biggest yeda? Yeda as in like somebody who's like a nutcase. वो on the pitch deliver कर देगा. Off the pitch, the guy is a fucking nutcase, man. Carrying Galatasaray, even I can do that. साले नाचो को वापस ले आओ मैड्रिड में. Chelsea have created a mess. No way any club pays more than 50 for Felix and 40 for Nkunku. Felix Nkunku and 40 again for Disasi. Bhai, that's crazy. Gavi is a nutcase. That's true. Yeah, we have Gabriel who's a nutcase, man. Delivers on the pitch, but the guy is fucking crazy, man. Rafa? Nah, not Rafa, man. Nunes, Gavi, Nunes, Kukureya. Kukureya is a full nutcase, bro. Vinny is a full nutcase as well. True, true, true. Rudiger as well. Bhai, Madrid actually have too many nutcases, to be fair. Rafinha कहाँ nutcase है, bro? He's a menace, but he's not a nutcase like that. Enzo? Nah, Enzo ain't a nutcase though. Grealish just an alcoholic, man. He's not a nutcase. Haaland, maybe. Nutcase as in like, you know, somebody you know is just gonna have off-field issues. He's gonna end up fighting with. He'll just go one day live on Instagram and end up fighting with people and stuff like that. Or he'll just create random nonsense off the pitch. But you know, on the pitch, he's undispensable, man. Yeah, exactly. कुछ गलती नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है. शेज़नी इज नॉट अ नट केस मैन, इज जस्ट ओल्ड. बर्नार्डो सिल्वा भाई, सुअर आदमी मैन, सुअर आदमी. अब मैं वही कह रहा हूँ. अब देख, वही वाली बात है. देखो पता है, ओबामियांग, Lacazette were not great dressing room presences, but these were so important for our kids, and they were so important on the pitch. Sometimes you can have too many nice guys, you know. And you need a little bit of nutcases who can just like simply break the system and carry you by themselves. Like Zlatan. Zlatan's a proper example of a nutcase. Now, Ben White's a menace, dude. None in Liverpool? Nah, Nunes is definitely a nutcase, man. You know, one day he's going to do something random and you're going to be like, what the hell? I got nuts in my case. Fantastic, Babaji. Fantastic. Time kya hoga? Abhi to 8 hi baje hain. Still one more hour to Baba and Bros. Baba and Lols, not Bros. Fermin Gavi Schwan. Schwan? अच्छा, अब शेज़ नहीं लिखना चाहते थे. Emi Martinez is a proper nutcase, man. He is. That's what I'm saying, man. Every team has nutcase and there's nothing wrong in that, man. Salah now, maybe. By the way, did you see Salah? Salah and Lineker. Did you see this? Wait. Lineker, भाई मैंने उसको KAR क्यों लिख दिया है? वो मराठी थोड़ी है वो. Lineker with KAR. All right. Let me just quit. Look at this. Read this. Gary and everyone joking. He's a lovely guy. I spent 10 minutes with him when I went to visit Arnish Lot. I didn't ask about his future. He was just being funny. He asked me, how old were you when you were finished? And he said, well, English football I finished when I was 32. And then I went to play in Japan for a couple of years. And he went, you went for the money, did you? And I said, well, yeah, I suppose so. And he said, yeah, I might do the same. And then he winked at the press guy. I'm telling you, man, Salah is a menace now, guys. Salah has gone to that unk stage that he doesn't care, man. He's gone to that unk stage. लुइस कैली अगेन. ही देखो यार, शिट हाउसर्स, मेनिस, इन लोगों को नहीं. जो लिंटन इज अ फकिंग नट केस. Oh bro, Debu's the first guy to take 2 yellows in the same game. Debu is crazy, dude. Ekitike lena chahiye. True, man. True. Ekitike would be nice. But knowing us, man, they'll be like 45 million for Ekitike. We'll be like, nahi, 16 million में देना है तो दे दो. Richarlison is a nutcase. True. Arteta is live. Yeah, there's a press conference going on, man. I'll see it later, man. Jordi Alba was a nutcase. I don't know if Jordi Alba was a nutcase. I think PK was a bigger nutcase than him, to be fair. Joe Linton is fucking cracked in the head, भाई. Yeah, Balotelli तो अब वो तो मैं कह रहा हूँ अब भी आपकी टीम में nutcases कौन है? Who's the nutcase in Bayern, यार? Vishal, who's the nutcase in Bayern? Like somebody who's like super unpredictable, but on the pitch he'll deliver.
DePaul, Danny Alves तो भाई, Danny Alves ended up being a criminal, man. I would want Arda Güler over Wirtz Musiala. You know what, Ayushi? I would also want Arda Güler at Arsenal. He's too good, man. Now, again, these guys are not nut cases, man. These guys are just a menace. Like आप लोग menace समझते हो? एक होता है बकचोद आदमी, ठीक है? जो मतलब बकचोदियाँ करता है। एक होता है सटियाया हुआ आदमी, ठीक है? What Muller does is bakchodi. He'll go on Instagram live and he'll be like, my friend Kai Havertz can't wait to face you again. But yeah, you can barely hear him speak. Who? Vardy. Vardy is again a menace, dude, but he's also a nutcase to an extent, to be fair. Um, the O2 Arsenal was crazy as F. Oh, you mean the jersey? Yeah, it's a crazy kit, man. कोई नहीं, Muller, Muller. Okay. Sane. Bhai, Mane was a nutcase in your team, man. Punched a teammate, bhai. What the hell? No way we tried, bhai. It's a shame, man. We tried only 40 million for Ollie Watkins, man. I'm telling you, bro. These guys' purse strings are tighter than a nun's asshole, man. I'm telling you. Manas and Manas is a menace, man. That's true. Manas is a menace. Vidal is a proper nutcase. That's right. I think Simmons was suitable for playing 10 for Arsenal. Bhai, Simmons' ka contract is insane, by the way. Uh, Pep Guardiola. What I mean to say is, man, the purse strings are very tight, man. No Baba and Lols this week. It is. It is. We're doing it at 9 p.m. today, दोस्त now. 9 p.m. we have a stream. गावी या क्रॉन्कीज को एफएसजी से दूर रखो भाई. क्रॉन्कीज एंड एफएसजी साथ में नाश्ता करते हैं भाई. Xhaka was a nutcase, dude. Crazy nutcase. But he's a professional on the pitch. That's great. Pep for sure. Pep for sure. Pep for sure. What is Baba and Lols? It's a show we try to do, man. After each week, try to make fun of each other. Um, Baba बच गए, man. Baba बच गए. Imagine if Graham Potter, man, beat them yesterday. It's crazy. Tonali is just a gambler, dude. Benny Blanco is a menace. He's not a nutcase. Maybe Garnacho. I don't know about like Alejandro, but Roberto Garnacho is a fucking nutcase, man. Kudus is a nutcase. He beat the shit out of Spurs. Mope again. Mope ain't a nutcase though. Anyways, this all started with Osimhen. And I think Osimhen, क्या ही बताऊं यार दोस्तों. I would not. I think if Sesko fails, if Sesko goes to Barca, if Gyökeres goes to United, if Isak doesn't move, all right, Arsenal fans, tell me this, or you know what, all of you, put on your best director of football hats on. Tell me this: if Arsenal try for Sesko, but Sesko says मैं तो Barca जाऊंगा and he goes to Barcelona. If Gyökeres goes to United and Isak isn't moving, who should Arsenal even try for a striker, bhai? Suarez was a proper nutcase, man. That's true. अपना नटकेस आर्टेटा है वुल्स के अगेंस्ट. व्हाट? आई मिस्ड इट, मैन. शाइट. अपना वुल्स के अगेंस्ट इफ ही लॉस्ट माइकल ओलिवर के भाई. अरे होसलू, ब्रॉबी, एकेटीके. चलो एकेटीके स्टिल अ डिसेंट शाउट, मैन. Ronaldo not happening. Hoselu not happening. Jonathan David ain't a bad shout, dude. I think honestly, jokes aside, I think if we miss out on Sesko, Isak, and Gyökeres, I think we will go for Openda. I think we'll go for Openda. We should go for Watkins. I think Watkins' ki boat has sailed, brother. Retegi could be one of them, but I think it'll be Openda. I think we'll go for Openda then. Rafi, it's not gonna happen, man. Nkunku, by in your dreams, man. Taremi won't happen. Watkins will be too old. Undav is popular shout. Nah, man. Mm. It'll be like one of those. Either it's gonna be like Sheikh Vic वगैरह somebody, but मेरे हिसाब से it's gonna be nah. Boniface, no way, man. They need that Saudi level of fees to let him go. Rashford in our dreams, bhai. Openda went to Napoli? No, bhai. Noah Okafor went to Napoli, bhai. Openda abhi to Leipzig में ही है.
Yeah, he's for Leipzig only. I think it'll be Openda दोस्तों. लुकमैन तो अलग ही लेवल है, नूनेज नहीं प्लीज. ही प्रेफर्स वॉटकिन टाइप्स मोर बॉल प्लेइंग वंस. नहीं भाई, देखो यू कांट कीप क्राइंग अबाउट एक्स फैक्टर एंड देन यू चूज नॉट टू गेट एक्स फैक्टर. इज सस्को वर्थ इट? आई थिंक ही इज भाई. I think physically he is a very dominant profile. He's PD, he's young. He also misses a lot of chances by. But I think he's worth it by. He's definitely worth it. Ekitike underrated play. Newcastle wanted him before Isak. Okay. Ekitike is definitely underrated. What I don't really want, man, is for us to end up getting like, is Kolumani a permanent transfer to Juve or loan पे गया हुआ है? Like, I don't want us to go for a Kolumani or a Gonzalo Ramos. ऐसे लोग नहीं चाहिए यार. Please, I'm done. I'm done. What happened to Ollie Watkins? भाई हमने, it's so frustrating. So the Athletic article जिसमें David Ornstein की commentary added है. So here's the thing. Before the news of the Watkins bid got leaked, um, उससे एक हफ्ते पहले हमने उनसे पूछा था for Watkins, and they said that it will take at least 60 million for us to come to the table. So they were open to sell Watkins. Okay. Then um, उसके बाद हमने क्या किया, हमने सोच लिया कि हमारे, Arteta was okay with it. Arteta wanted Watkins. But the reality is that the board felt he is not worth 60 million because A, he's old, B, उसको आप resale नहीं कर सकते, and C, you're getting a very limited output from him in terms of the years he's going to give for Arsenal. So in their infinite wisdom, the board bid 40 million for Ollie Watkins. 40 million. For the guy who had the same number of GA as Haaland last year. 40 million for Ollie Watkins, considering the season he had last year, considering he's an England international, considering he's an Arsenal fan who would have pushed for the move if he started it at 60. We bid 40 million. 40 million. Matthias Tell is going to cost Spurs around 70 million total. Hoyland cost 72 million for United. Not a great example, but that's the strikers market. Marmoush cost 70 million, bhai. Soboslai cost 60 million. Nunes cost 85, 75 million. What are we doing? Victor Roque cost 40 million. Arey, here is the thing, man. What I don't understand about this argument, now, the 2-3 years wali argument is this. It's not like if a player is gonna give me 10 years, that every other club statue ho jayega next 10 years ke liye. Clubs are gonna move forward and you will also move forward. McAllister cost 35 million. He's a midfielder. He's younger. He had an agreement with Liverpool. That's the long and short of it. Only Liverpool does Gakpo for 35 million and McAllister for 35 million, but they also do 60 million for, uh, I don't know, Soboslai, and then 75, 80 million for Nunes. They do it, man. They also do 90 for Virgil van Dijk, but they also do 30 or 25 for Konate. They do it. Zero signings can't be my club. Pain, man. No, I'm look, here's the thing, Abhinav. I'm not saying अगर Watkins आता हम टाइटल जीत जाते हैं. But you know क्या होता? हम थोड़ी सी उम्मीद लेके चलते कि ठीक है, चैंपियंस लीग की बात आएगी ना, वॉटकिंस डिलीवर कर सकता है, बंदे ने चैंपियंस लीग खेल लिया है. ठीक है, हम ये उम्मीद कर सकते थे कि बोर्ड ने ये सीजन राइट ऑफ नहीं किया है. और वन ऑफ द रीजंस दैट एथलेटिक गेव फॉर अस नॉट गोइंग फॉर वॉटकिंस इज दैट द क्लब वाज अनश्योर कि हमें फिर अपने मेन टारगेट समर में मिलेंगे नहीं. बैंक के लोड़ो, अभी तक कहाँ मेन टारगेट मिले हमें? अभी तो कोई वॉटकिंस नहीं था, अभी तो कुछ भी नहीं था. अभी कहाँ हमें मेन स्ट्राइकर टारगेट मिला? अभी तो तुमने कौन सा समर में सेस्को खाड़ लिया था? मटेटा, बस यही यही करते रहेंगे भाई हम. मेन टारगेट नहीं मिलेगा समर में हमें. वो वर अ मेन टारगेट फॉर अस, मैन.
Yeah, that's what I'm saying, bro. These guys think, and it's so frustrating because these guys run one of the most successful NBA franchises in the world, Denver Nuggets. They pay Nikola Jokic so much money. They understand you need a superstar fucking player and you need to pay him superstar fucking wages and you have to pay superstar fucking costs. Cunha, Cunha के लिए 60 million. Even bloody Cunha is going to cost you 60 million, man. Crazy, man. These guys are insane, man. Vlahovic is one. Vlahovic is the definition of wasteful, man. भाई भाई we can face Juventus, Milan, Feyenoord और PSG in March. हमारी अटैकिंग फ्रंट थ्री होगी हैवर्ट्स मार्टिनेली ट्रोसार्ड बेंच से कौन आएगा रहीम स्टर्लिंग बेंच से कौन आएगा एक 18 साल का लौंडा का चैंपियनशिप वाला मैनेजर जीएम चला गया मिनेसोटा एंड हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग कौन था वो टकला यार आई फॉरगेट हिज नेम आल्सो मैन भाई आई एम टेलिंग यू चैट आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ मे बी यू कैन बुकमार्क दिस if the board fails to back Arteta now in the summer, he's gonna go. He's gonna walk and he's gonna get snapped up like this. He's gonna get snapped up like this, and then हम कुछ एक और हिपस्टर मैनेजर को ढूंढने चले जाएंगे. हम बोलेंगे इराओला आ जाओ, हम बोलेंगे थॉमस फ्रैंक आ जाओ, और ये क्रोंकीज फिर से क्लब को डुबा देंगे. अपनी ही गलतियों की वजह से क्लब को डुबा देंगे क्योंकि इन भैंके लोड़ों ने 3 लॉयर्स भर दिए हमारे बोर्ड में. जब से विनय वेंकटेशम गया है हम जूलियन स्लॉट को ले चलो ठीक है रेवेन्यू बढ़ने लगा फैंटास्टिक लुक व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट एन इकोनॉमिक्स पर्सन इन द इकोनॉमिक्स पोजीशन. एडू गया है. एक जेसन एटो नाम का बंदा है जिसका फर्स्ट जॉब होगा ये एज अ डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल. कुछ नहीं किया बंदे ने. मैं कहता हूं तुम अगर नोनेरी और लुइस कैली के कॉन्ट्रैक्ट से एक्सटेंड कर दो भाई कुछ तो मैं समझू कि तुमने जनवरी में किया है. जेसन एटो हैज डन नथिंग. ठीक है. एडू के जाने के बाद टिम लुइस बंदे को हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बिठा दिया. एक लॉयर बाय ट्रेड है. लॉयर्स बहन के लोड़े इतने कंजर्वेटिव होते हैं भाई लोग. दे विल नेवर मेक अ डिसीजन दैट्स गोना कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. इकोनॉमिक्स पर्सन चाहिए तो मुझे भी हायर कर सकते थे. इफ अटेटा लीव्स यू थिंक ही टेक सम प्लेयर्स. भाई so many people will lose faith in it, man. आप इतनी इंटरनल न्यूज कहाँ से लाते हो यार. इट्स अ कोएलिशन ऑफ news articles, coalition of people who've known the other people in the club, and coalition of just other leaked news which ends up being true anyway. Aston Villa ने Watkins को क्यों नहीं बेचा. They thought they bought Rashford Asensio Malin because he is crucial for them, man. ये बंदा उनके build-up से लेके उनकी finishing से लेके बहुत है. Watkins has been with Villa since the championship, so he's a long-serving player, bhai. He's a big figure in their team. Dakshbhai, what's the reason newly promoted teams don't prefer dinosaur managers like Big Sam, Neil Warnock, Steve Bruce, especially when they struggle to build from the back? I think one of the biggest reasons championship managers come, because they think that whatever worked in the championship will work in the Premier League, and very quickly they realize it's not going to work. And then what happens is that they start playing in a way which is good for them, not for the club. जैसे साउथहैम्पटन के मैनेजर ने irreversible damage कर दिया साउथहैम्पटन के लिए this season. That guy is going to get a job somewhere in the future. अगर कोई नेक्स्ट ईयर वो भी प्रमोटेड टीम आएगी उनका एक मैनेजर सैक हो जाएगा ये वाला बंदा आ जाएगा साउथहैम्पटन वाला मैनेजर रसल रसल इज नेम राइट दैट्स हिज नेम राइट रसल सो दे स्टार्ट playing and managing for their own jobs in the future by non-football people running the club is always detrimental. United को भाई that fucking Woodward guy crazy man. भाई तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आयुष्मान. लिवरपूल को उससे पहले 3 गेम्स ड्रॉप करने पड़ेंगे हारने पड़ेंगे. Yeah, I think Dorgu is a good talent. Again, he's just very, very young. That's it. That's the only thing.
Big Sam and his antics. Sell Wenger to Newcastle and get me Isak. As a Barca fan, I'm proud to say La Masia having than buying a player. Nahin, that's good, man. But I'm telling you, man, there is a real danger to just only lying on your academy. I think La Masia is an exception because La Masia will always deliver. But I think it puts a lot of undue pressure on the academy to keep on producing talents and also to just keep pushing um, a lot of kids into these positions. Some of them are built for this, man, but some of them are not. Arsenal should have gone all out for Watkins. I agree, man. वॉटकिन से हम लीग नहीं जीतते, मैं ये भी नहीं कह रहा हम चैंपियंस लीग नहीं जीतते। एक इंटेंट दिखता कि हम कुछ जा रहे हैं और कुछ नहीं भाई, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आता दैट द बोर्ड हैज आवर बैक मैन। प्लेयर्स को लगता कि भाई चलो ठीक है, मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल सकता है। अभी देखना दुबई के बाद आके हम क्या खेलने लग जाएंगे 2-3 हफ्तों के लिए। Maeda is old now, right? Dyson Maeda. How old is he? He's 27 years old. I think the only thing with Maeda is, man, Scottish League to Prem League is big shout, especially for a title winning one, man. La Masia plus 2-3 good signings and we are good. Who's the next one up in La Masia chat? Amre might promote. It's too much for the kid. Ruin ho jayega. After 5-1 signing, bhai, it would have hit like crack, man. Not even joking. If you want a striker, try Samu. Again, if you get Sesko plus Samu, I'm fine with that, dude. If we had gotten Watkins right now and Samu in the summer, I would have been happy. That's two good strikers you have, bro. Tony Fernandez and अच्छा दोनों फर्नांडिस भाई जो कजन वजन है। बर्नाल तो चलो आ ही गया यार। टोनी एंड गील दोनों कजन भाई लोग, ठीक है ठीक है। टोनी एंड गील आर देयर, फेयर इनफ दोस्तों। चैट 500 पीपल आर स्टिल है भाई, स्ट्रीम लाइक कर दीजिए, अभी 410 लाइक्स हुए हैं। ऑलराइट, गिव मी मोर कोपियम एंड देन वील एंड द स्ट्रीम इन अ बिट। व्हाट अबाउट थुराम और सीडी के चार्ल्स द केटलारे? Yeah, De Ketelaere works in Atalanta, man, but De Ketelaere did not work in Milan at all. We just assessed him not to be good enough. I don't know if that's a good thing or a bad thing, but we assessed him not to be good enough. United did not want to pay the money, and Spurs agreed to pay 5 to 10 million loan fees, 10 million loan fees euros में, and 60 million euros का option to buy. Openda is probably, if there's no Sesko, probably if there's no Isak, then Openda becomes the guy. Turam अच्छा होगा for Arsenal. Who knows, man? Good player individually, but not a good headache to take. Ansu Fati is the joint third highest earner in Barca squad alongside Rafinha and Kunde. They earn 13-14 million euros per year. Pray for Newcastle. भाई 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 भाई, let me show you something. Show you a couple of things actually. Read this, okay? Kroenke meeting prompted Watkins' pursuit. First of all, why does it take Josh fucking Kroenke to come for you to realize? ये तुम्हें ACL इंजरी के बाद नहीं पता चल गया था जब हेसूस की इंजरी हो गई थी कि हमें एक स्ट्राइकर चाहिए? क्रोंके की मीटिंग prompted Watkins' pursuit. What a pursuit भाई, 40 मिलियन। Late interest in late interest in Morata. First of all, that is criminal to have a front line of Havertz and Morata. But not only that, you got fucking beaten by Galatasaray, bhai. So you had interest in Morata, but you got beaten by Galatasaray. In-person talks with Naipan and his 6 criteria for joining. Gut feeling, play time, status of the league, ये सब फुलाना ढमकाना इसकी कुछ है। जिनचेंको एंड टिर्नी को आप बेच नहीं पाए, फेयर इनफ, उनको अच्छा नहीं बेचा भाई, हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स की कमी है। What the fuck, man? You know what? ये क्या मजाक चल रहा है? स्टर्लिंग हैवर्ट्स मोराटा भाई,
नहीं, आज मानस नहीं आएगा यार, मानस इज आउट टुडे। इज दिस, भाई, मजाक से हटके, टेल मी वन थिंग चैट, if your team is going for a bloody title, you already have a striker who is short of confidence in Havertz. You have Morata who has not performed in Milan, who at the tail end of his athletic career also wasn't performing. He was great, by the way, with Griezmann. But if you're going for a title, how can you go for Morata, man? चलो ठीक है, मैं कहता हूँ वर्स्ट केस सिनारियो हो जाता कि हम मुराटा ले आते और हम विटर रीस ले आते, बिकॉज वी वर इन फॉर विटर रीस ऑल्सो। बट वी डिसाइडेड कि हम विटर रीस को समर में देखेंगे और सिटी ने अभी खरीद लिया। भाई हाउ? दैट्स क्रेजी मैन। आप स्टर्लिंग, हैवर्ट्स, मोराटा, ट्रासार्ड एंड मार्टिनेली की फ्रंट लाइन के साथ यूसीएल में उतर रहे हो मैन। भाई, Morata and Havertz, the only time these guys should be on the same team is if you're playing FIFA 19 Ultimate Team, man, for chemistry. It's this is why it's so upsetting to me as an Arsenal fan कि हम इतने पास आ जाते हैं और ये ओनर्स हमारी खुद के सर पे बैट मार देते हैं भाई। It's not even anything, which is why I can't even blame Arteta for this, man, because डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जो पहले था वो हमें रोड्रिगो मुनीज ऑफर कर रहा है। जो लॉयर है, जो सीईओ टाइप्स बन रहा है, वो कह रहा है कि हम डेक्लन राइस के लिए 100 मिलियन नहीं देंगे। और भैंचो जब फाइनली हमारे पास एक मौका है स्ट्राइकर को रीइंफोर्स करने के लिए, ये भैंके लोड़े 40 मिलियन देते हैं वॉटकिंस के लिए और मोराटा के लिए पीछे जा रहे हैं भाई। भाई मतलब क्या बात करूं यार। सो इट्स नॉट रियली लाइक आई कांट इवन ब्लेम आर्टेटा मैन, ही वांटेड वॉटकिंस एंड दीस भड़वे चूतिए बोर्ड वाले बिड 40 मिलियन फॉर वॉटकिंस। We wanted a striker and they did not want to get Watkins. They looked for Morata. For fucking Morata. बताओ क्या है? These guys, you look, there are a brand of people who are so कंजूस chat. ठीक है, देयर आर ब्रांड ऑफ पीपल और एक्चुअली लाइक मतलब लोग लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि ठीक है ये बनिए ऐसे होते हैं, मारवाड़ी ऐसे होते हैं, वट एवर स्लैंडर देयर इज। बट देयर इज एन एक्चुअल ब्रांड ऑफ कंजूस पीपल, ठीक है, जो शॉप्स पे जाते हैं, वो देखते हैं कि कौन से आइटम्स एक्सपायरी के पास है, क्योंकि वो सस्ते में मिल जाते हैं कभी कभी। तो दूध अगर 2 दिन में एक्सपायर होने वाले, हम इस पाइल से लेंगे। फल वल अगर 3-4 दिन में एक्सपायर होंगे, हम इस पाइल से लेंगे। ये इस ब्रांड के भाई, these guys are so fucking stingy, man. Stingy. Crazy, man. Yeah, the thing with Watkins is, one, he's Premier League proven. That is an instant bonus. There is no adaptation period. There is only tactical adaptation. There is no physical adaptation. There is no speed adaptation. He can score. He can score with the head. He can help in build up also. Watkins is a fantastic striker. He knows how to win. He knows how to play. Did the ownership went and brought Merino and Havertz? That has too much control over transfers. Here is the thing: when you have control over transfers as a manager, because Merino was a huge contention, so was Calafiori. The manager is accountable then. फिर आप मैनेजर की ले सकते हो, आप मैनेजर को ब्लेम कर सकते हो, and the manager has his own ways of fixing things. But then abandoning him, don't give him a contract then, bhai. If you're going to shortchange him like this, that's the problem. नहीं, सलीवा का नहीं होगा। See, here is the good thing about it, man. We have some really good characters, but it's that day is not far away when these guys also start questioning the ambition of the board, man. If Declan fucking Rice is coming at the end of the games and saying, "I'll be very surprised if we don't do anything in the forward department." Thank you so much, Krish bhai, but it's not my birthday. डेको ने एटलीस्ट रिन्यूअल करवा लिया पेड्री, गावी, अराहो का। कोई लुकमन के पीछे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसका मन नहीं होगा मूव करने का यार, पूछा तो होगा किसी ने।
यार गेट मी टू स्ट्राइकर्स डूड, गेट मी सेस्को ब्रो, गेट मी सेस्को, और गेट बेस्ट केस वुड बी ईसाक बट आई डोंट थिंक इज मूविंग, सो सेस्को वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो। टिम्बर का क्विंटन टिम्बर भी अच्छा है। हाँ हाँ, दैट्स फाइन। वी आर होपिंग फॉर Nwaneri to be. Like, imagine putting all your eggs in the fucking 18-year-old ki basket, man. And putting all your eggs in, we'll get primary targets in the summer, man. ओह नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बारसा के लिए एक स्ट्राइकर, सेस्को इज योर बेस्ट मैन। मेरा जलता है आप लोगों का डिफेंसिव वॉल है। अरे हमारे डिफेंस अच्छा है भाई, अटैक लेकिन हम क्या करेंगे। बी हम्बल है भाई, सभी हम्बल रहो भाई। साका कब तक आएगा? मार्च एंड तक मान के चलो आप। मार्च के इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आप मान के चलो आ जाएगा। सेस्को लेफ्ट विंग जूबी सीएम स्पानियल जी के भाई, दिस इज मिनिमम साइलेंट प्रिंस, दिस इज मिनिमम। मिनिमम। देखो लुकमन का भी है, आरसी है, बट वो मूव नहीं करना चाहता, हो सकता है समर में कर जाए। एटलीस्ट डिफेंस तो अच्छा है। भाई सबको वो पसंद आता है जो उनके पास नहीं होता है, ठीक है। जिसके पास सुंदर बीवी होती है, बोलती है एटलीस्ट तेरी गर्लफ्रेंड खाना तो बना देती है। और जिसकी बीवी खाना बना देती है, वो बोलती है एटलीस्ट तेरी गर्लफ्रेंड सुंदर तो है। तो ये सब सबका चलता रहता है, ठीक है। भैया डोंट वरी, योर डिफेंस इज मोर देन इम्पोर्टेंट इन कप गेम्स देन अटैक। आई थिंक आर्सेनल हैव बेटर चांस इन यूसीएल देन पीएल। भाई नहीं भाई, भाई नहीं, यही मेंटालिटी लेके हमें डूब पड़ेगी यार। भाई दिस इज कॉल्ड, मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज वाई द स्ट्रीम इज कॉल्ड कोपियम। कि हम सेकंड फिनिश करेंगे और यूसीएल के सेमी में आ गए ना। भाई इस पूरे स्क्वाड को भारत रत्न मिलना चाहिए भाई, उस लेवल का पुरस्कार मिलना चाहिए इन लोगों को। कि आपने इतनी ज़्यादा एडवर्सिटी के बावजूद, जहाँ इंजरीज, जहाँ रेड कार्ड, जहाँ पे पीजीएमएल की माँ की, ये सब मिला के आप सेमीज तक ही पहुंच गए भाई, भगवान का बहुत बहुत भला है। देखो टैलेंट आईडी अच्छा ही, फंबल्स एंड नेगोशिएशंस रिन्यूड रहा बिकॉज फ्लिक एंड अदर्स टीममेट्स स्टेप्ड इन एंड पेड्री का नेगोशिएशंस खराब है। वो यार सबके अंदर कुछ ना कुछ होते हैं यार, ऐसी चीज़ें भाई। क्रॉन्कीज की एमकेसी भाई। कुडूस वर्थ 80 million। नॉट रियली मैन, बट वर्थ इज नॉट लाइक सब्जी का क्या दाम चल रहा है। इट्स व्हाट ही इज वर्थ, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वेस्ट हैम वांट, हाउ इंपॉर्टेंट ही इज टू वेस्ट हैम एंड हाउ इंपॉर्टेंट ही विल बी टू द बाइंग क्लब। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। कितना सीएस रखे हो इस सीजन यार? बहुत कम रखे हैं इस बार। इस सीज़न हमने 8 क्लीन शीट रखी हैं, एवर्टन ने 9 रखी हैं और फॉरेस्ट ने 10 रखी हैं। लिवरपूल ने 7, पैलेस ने 7, यूनाइटेड ने 7, न्यूकासल ने 5। नॉट बैड ऑल्सो मैन। Signing of this transfer window, that's a good question, chat. Who is the signing of the January transfer window? Who is the signing of January transfer window? ये भी बात है। मारमूश, क्रोंकी और चौंकी। Quara, I think, yeah, Quara is the best signing. Quara. Quara is the best signing. By the way, crazy thing you've heard about John Duran, by the way. Have you heard this? He has asked to live in Bahrain with his girlfriend. So he's going to take a flight 500 kilometers every day, every week, to come to Saudi and play. That's how much money he has, by the way. नीको गोंजालेस भाई, उसको खेलने दो। आर्सेनल टाइटन होप्स फलानी टीम लिवरपूल को हर देते, नॉटिंघम फॉरेस्ट को केडी टीम टीम कर दे। पता नहीं सारंग भाई, बट फलानी हमारी तो टाइटल होप्स हैं भाई। अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा दक्ष भाई। नहीं क्या ही बताएं। Nico Gonzalez because Bussy rated him quite highly when he was in La Masia. Let him play for a single second, bhai. Let him play for a second at least, man. Maybe you guys might be right. Nico Gonzalez could be, but for now, I think it's Quara, man. What a coup from PSG, bhai. Evan Ferguson to West Ham. West Haram, man. क्या गोल खाए कल वेस्ट हैम ने भैंस। Bournemouth new striker is damn good. Who is the new striker for Bournemouth, Adarsh?
एंटनी इज द बेस्ट, बहुत ही बढ़िया दोस्तों. हु इज द न्यू बोर्नमथ स्ट्राइकर? एवन नीलसन तो इंजर हो गया भाई, उसका मेटाटार्सल हो गया. व्हाई डिडंट वी ट्राई फॉर कुडुस? बोला नहीं होगा या वेस्ट हैम ने कि हम बेचना चाहते हैं. कैन यू सी दिस यूनाइटेड टीम क्लिकिंग फॉर नेक्स्ट सीजन? नहीं यार, ऑनेस्टली बताऊं, नहीं अभी नहीं. इट्स गोना टेक अ कपल ऑफ इयर्स. यू विल हैव योर ग्रेट मोमेंट्स एंड यू विल हैव योर टट्टी मोमेंट्स ऑल्सो. अभी टट्टी मोमेंट्स आर मोर देन ग्रेट मोमेंट्स. नेक्स्ट सीजन थोड़ा बैलेंस होगा. स्पर्स कॉस्ट फ्लीस्ड मैन. 10 + 60 ब्रो. क्लाइवर्ट, क्लाइवर्ट का मूव किया अभी. Santi to Milan could be really good. That's true, man. Imagine replacing Morata with Santi Jimenez. But bloody Joao Felix is also in Milan, man. But very bad that Ismail Benacer left Milan. Evan Nielsen has injured himself now. उसका metatarsal हो गया है. एवन निल्सन का मेटाटार्सल हो गया है एंड उनियाल का वो हो गया ACL. Madrid defense, Arsenal attack, Chelsea GK match made it. Dango Tara, yeah, I understand. Best transfer this season is Julian Alvarez. This season ka best transfer. Could be. Alvarez is a great shout. Alvarez is a great shout. Who else can be transfer of the season? Imagine Feyenoord को UCL से knock कर दें. Crazy. Mbappe, yeah. Mbappe has been the best one for sure. Thanks for subscribing, Kefilwara. Savinho's been good too, man. Really, really good. Sorloth good enough for us. Sorloth and moving. I don't know if he's good enough for us or not. Raya, yeah. Yildiz is really, really good. Olmo, yeah, he's delivered for sure, man. Olise has been really, really good. You're right. You're right. You're right. Sancho's been really good as well, man. Sancho's been really good for Chelsea. Actually, it's surprising that he's made himself really, really good. One to watch for transfers, yeah. This winter wala though. I want to see how Rashford does at Villa, doston. Because if Rashford has a purple patch for 6 months, man, that's crazy. Oh, Krupi, yeah. I've heard they got a new striker, man. I heard they got a new striker. आप मुंबई से हो दिल्ली से? मैं दिल्ली से हूँ दोस्त. Villa balled out in the market, yeah. Asensio, they sold Duran, they got Rashford, they got Marlin. Good stuff, man. Tell's first match is against United. Hmm. Dobbik का career finish हो गया रोमा में. Poor guy, dude. He was doing so well at Girona as well. Yeah, Baba and Bros is in 16 minutes. We'll end the stream soon, दोस्तों. हो जाए पर्पल पैच, फिर समर में 100 का बेचेंगे. I'm saying it's him having a purple patch is very important for Villa to get top 4. Right now अगर हम Premier League table देखें ना दोस्तों, it's very hotly contested now. It's a good thing we beat City this week. Because अगर नहीं हराते, could have been दुविधा, man. Solid दुविधा हो जाती. Chelsea would have been 4 points behind us and City would have been 3 points behind us. At least max 3 points behind us. So yeah, Liverpool of course 6 points. Arsenal 50 points, 6 point पीछे. Liverpool के 56, 50. Forest in 47. Who are they playing next, by the way? Forest, Exeter, and then Fulham. Fulham's going to be a good game. Chelsea are playing Brighton. फिर से Brighton हो गया. अरे बैन दी आंख. City, who are City playing next? Leighton, फिर Madrid, and then Newcastle. Oh my god. It's crazy for them. I think we're playing Leicester next. I think अभी Newcastle है, फिर Leicester है 15 Feb को. Solid. Good fixture for us, man. To keep up pace. ये लोग किसको खेल रहे हैं? Liverpool. Merseyside in the league. Good stuff, man. Yeah, but look at the table, man. If Villa need Rashford to start shining because they're like 37, they are 4 points away from a possible Champions League position. And the team that is occupying that position has just spent as much money as Villa has.
Chelsea, they got a very important win yesterday, dosto. Varna, they were down in like sixth, seventh pe hoti Chelsea. Oh my god, Chelsea would have been in seventh if they didn't win yesterday. Oh, crazy, man. Shit, yeah, you're right. Chelsea would have been seventh yesterday if they had lost to Potter. Oh. So yeah, it's not going to be easy for Villa, man. Even if they win the next week, they only climb up to seventh maximum. They need that Champions League, man. They need that Champions League. Tijani Reinders as a bowler could have gone for him in the summer. Milan won't sell for less than. Bhai, Tijani Reinders, Rafa Leao are and Theo Hernandez are crucial players for Milan. They're not going to sell them for cheap. 4 to 10 is very crowded, you're right. Where do you see Wirtz in the next two seasons? Bayern's are sitting. For me, it's going to be Bayern, dude. But I'm very interested in seeing what happens to Musiala, yaar. Musiala का कुछ भरोसा नहीं है अभी. Although he might sign an extension regardless at the end, man. He always wants to be the face of Bayern Munich. But he's not signing that extension, which is fucking crazy, man. Yeah, I know, I know outbound edits. मैंने भी FM पे नाइपान के साथ खेला हुआ है. Greenwood for Marseille has been very, very good. Yeah, you're right. You're right. Hello, Akshay. How are you? Ansu Fati received an offer from Al Shabab, but he rejected it to stay at Chelsea. They were willing to offer 10 plus 15. Ansu's gonna get his money, dude. Ansu's gonna get his money and then leave. Musiala comes to Spain. He wants a release clause. Yeah, that's the biggest thing. He wants a release clause from Bayern, and Bayern won't give it to him, I think. अगर पॉटर से हारते तो एंजो का एक्सपेलियामस हो जाता. Yeah, we need more than strikers. They need midfielders too. Look how losing Carvajal cost us the UCL and our Liga. One missing player can break the whole team. Oh, no, for sure. It's not only because of Azim Bhai, because of what you said, but we are also going to lose a lot of midfielders. Most likely, if as of now, Partey and Jorginho are going to leave, that's two midfielders. So your basic midfield basically becomes Rice, Odegaard, and Merino. Even if you put Miles Lewis Kelly in midfield, man, you need more fucking midfielders. Yeah. So, zarurat to hai. Chido Obi is not in the under 18. He may have been promoted to the first team. देखते हैं यार. Let's see what Chido does. Be very important and interesting to see him. Who do United play next in the Prem? यूनाइटेड का पहले एफए कप मैच होगा ना. आई थिंक वो पहले उसको लेस्टर में खिलाएंगे एफए कप में चीडो को. Oh, they play Spurs next in the league. Crazy game. Crazy game. Tell versus Chido. दो लोग जो हमारे पास होने चाहिए थे. सागा के एब्सेंस में आर्सेनल अच्छा कर रही है. मैं वही कह रहा हूँ यार. मैड्रिड बॉय. Which is why I don't want to blame Arteta, man. With Saka injuries and all the fucking red cards and shit like that, which has happened with us now, we're still here. Who knows, man? Relegation Derby is outbound. Bhai, if let's see what can happen. So Spurs are 14th, United are 13th. दोनों में 2 point का gap है. Whoever wins goes up top, man. Draw helps neither of them. Spurs need this win badly, dude. Where is it? Is it at OT? अरे एक तो ये भी बात है कि जब OT में भी होगा तो मेरे को पता नहीं यूनाइटेड अच्छा करेगी या बुरा करेगी. Oh, it's at the toilet bowl, man. It's at the toilet bowl. So yeah, it's weekend. It's Spurs versus United. At the end, ज़रूरतें कभी खत्म नहीं होंगी. सही बात है गीत. Yildiz or Vlahovic? Yildiz is better, man. If you're asking who will I get, Yildiz. Mm. Buy Leva for 30 million, he'll give 2 solid years. ठीक. What, you don't know the Tottenham wala thing? Wait. It's their stadium, man. It's how it looks. Look at it. I ain't even gonna show you the edited image. Look at this chat. Does it not look like a toilet bowl? Look at this. That's the stadium chat. एंड्रिक ले आओ लोन पे. नहीं आएगा एंड्रिक लोन पे यार. So that's why we call it the toilet bowl stadium, bro. It's crazy. This is the meme, by the way. This is the stadium finished. This is why we call it the toilet bowl.
Who am I trolling? Trolling Spurs, man. Who will get Naipan City or Arsenal? I think Girona or Arsenal या Villa के में कहीं जाएगा. Never gonna unsee this now. How have you not seen this? Is what I'm asking, guys. पानी पी के सो जाओ. All right, chat. Baba and LOL starts in 8 minutes. Um, मजे करेंगे उधर. Manas ain't there though. So yeah, चलो. Bernabeu toilet is better. There's a Bernabeu toilet one also. Let me check. Okay, fair. I see it. I see it. Chalo chat. See you all soon. All right. Tada. See you. Bye bye. Thank you so much for joining in. Stream like kar dena. Subscribe if you haven't already. See you. Bye bye. And stream Oh, lol.